न्यूजीलैंड। चेस अब तो क्या, अब तो जीता रन से तो नहीं, चेस कर गया अगर जल्दी, मैं कह रहा हूँ 25-30 ओवर में चेस कर गया तो पाकिस्तान को कोई 50-60 हजार रन से ना जीतना पड़ जाए। क्या यार भाई नेट रन रेट तबाह बर्बाद होकर रह जाएगी श्रीलंका की और न्यूजीलैंड की ऊपर हो जाएगी जिस तरीके से अभी तक खेल रहे हैं। 30 रन पे 2 विकेट। और पाकिस्तान के लिए वही गाना याद आता है कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले, मैं कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, जा बेटा जा जा चले जा। मैं तो श्रीलंका को कर रहा हूँ सपोर्ट, आप किसको कर रहे हो? जब से इस मनहूस ने श्रीलंका को सपोर्ट किया है 30 पे 2 हो गया, देख लो आप। और वो भी अभी बचा कैच, दूसरा बंदा बचा हुआ बस। ब्लैक जैकेट इसीलिए आज सुबह सुबह ली है। ओह न्यूजीलैंड ब्लैक आज ब्लैक जीतेगा। आज यहाँ पर न्यूजीलैंड का अंतिम सपोर्ट है। मैंने लोगों से ये भी पूछा कि यार आप चाहते क्या हो, सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड है पाकिस्तान आए, कह रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसा क्रिकेट खेला है पाकिस्तान डिजर्व ही नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। अफगानिस्तान का नाम भी कुछ लोग ले रहे थे। बिल्कुल अफगानिस्तान बनता है, इनफैक्ट पाकिस्तान से ज्यादा लोग अफगानिस्तान को ही प्रेफर करेंगे। और पाकिस्तान और कईयों का प्लान सुशांत भाई वाला था, क्या पाकिस्तान को लाएंगे, लाके हराएंगे, उसका मजा ज्यादा लेंगे। मैं तो यही चाह रहा हूँ कि आ जाए वो किसी तरीके से। यही चाह रहा हूँ यार, मुश्किल लग रहा है 30 पे 2 हो गया श्रीलंका, बहुत मुश्किल है यार। पर कंपटीशन रहेगा इतना ज्यादा अगर पाकिस्तान आया भाई रुके तो जाओ भाई। मैंने दूसरी विकेट गई थी आएगी और दूसरी विकेट आप आने वाले ना खेला जाएगा भाई, लगी रहा है। तो कृषि जी मैच तो खत्म हो चुका है यार, ये ऐसा लग रहा है परेरा ऐसा खेल रहा है, पार्टनरशिप बनेगी, रुके यार। और बारिश से न्यूजीलैंड श्रीलंका ही सिमट जाए, फिर क्या करेंगे? हाँ बारिश। कुरैशी जी ये सैंडविच फ्लाइट पे मिला था? हाँ वही खा रहा हूँ। नहीं फ्लाइट पे नहीं मिला था, फ्लाइट में एयरपोर्ट पे लिया था उधर के। ओके हाँ एयरपोर्ट पे मिलते हैं ऐसे सैंडविच। चलो जी 4.1 ओवर्स, कुदरत का इंतकाम देखते हुए आप लोग 30 रन पे 2 विकेट भी आउट हो चुकी है। बोल्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, शॉर्ट बॉल दी है, लेग साइड पे खेली गई है। मुश्किल है भाई, अंडर प्रेशर श्रीलंका का मुश्किल हो गया बिकॉज हालांकि परेरा ठीक खेल रहा है। समर विक्रमा भी है, समर विक्रमा इनका सबसे बड़ा बैटर है इस वर्ल्ड कप का, सबसे ज्यादा रन उसने बनाए। तो अब हो सकता है ना कोई इनके लिए भी वो मैक्सवेल इनिंग खेल जाए। इनिशियली विकेट आया थी लेकिन अभी है बैटिंग डीप भी है, हो सकता है अभी अच्छी बैटिंग जो है वो श्रीलंका। अरे है तो बैटिंग पिच ही ना, श्रीलंका थोड़ा सा चांस फेयर चांस मिलना चाहिए इमाम। बट यार इनका बट इनको पैनिक करके यार हर मैच में टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो रहा है, ठीक है हर मैच में तो नहीं हो सकता ना। एक देखो परेरा तो खड़ा है ना वहां पे भी, परेरा ऐसे खेल रहा है, आज उसके लग रहा है कि आज उसका दिन है। अभी तो गया था आउट होने वाला था हाँ, लेकिन जो कैच ड्रॉप हुई उससे लग रहा है उसका दिन है। और उसके बाद छक्के भी मारे, चौके भी मारे, तो लग रहा है चलो देखते हैं परेरा अकेला भी क्या। यार देखो समा विक्रमा ने आउट होना है, समारा विक्रमा ने। अच्छा 50 रन पे ये टीम आउट हो जाती है। आप चाह रहे हैं कि वो आए पाकिस्तान, और फिर भी देखो मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान आए, लेकिन अगर न्यूजीलैंड अच्छा खेलती है तो वही आएगी ना यार। न्यूजीलैंड अच्छा खेलते हैं, न्यूजीलैंड ही आएगा। चीजें अब पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है होनी थी जितनी हो गई अच्छी। अब बारिश के चांसेस होते हैं, बारिश नहीं आती है, फिर आप यहाँ पे भी देख लो विकेट्स आ जाते हैं, तो चीजें आपके अगेंस्ट। ये लो यार तीसरा बोल रहा था मैं, कोलैप्स लोडिंग जब से इस आदमी ने सपोर्ट किया है बर्बाद होकर रहेगी श्रीलंका। मैच तो खत्म हो चुका है भाई 32 पर 3। एक ही चीज बचा सकती है वो है बारिश। गयो और वो बारिश कम से कम 1 घंटा नहीं आ रही, पूरी खिलखिलाती हुई धूप है, कोई बारिश नहीं आ रही। एक बारिश जो है अगला 1 घंटा बारिश नहीं आ रही, पूरी खिलखिलाती हुई धूप है भाई यहाँ पर। खत्म हो गया यार समारा विक्रमा जो आप कह रहे थे कि बेस्ट बैटर श्रीलंका का इस टूर्नामेंट में रहा है, मतलब श्रीलंका का टॉप ऑर्डर लगातार पावर प्ले में स्ट्रगल कर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ किसी के बल्ले से रन निकल रहे हैं। और श्रीलंका की ये जो कमी थी ये बहुत पहले कर दो, इसका थंबनेल कर दो। अच्छा चलो नेक्स्ट वाले कर लेंगे, कुदरत का इंतकाम। देखो यार वही तो बात है। और ट्रेंट बोल्ट पे कह रहा था बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी कर गया काम अपना, 2 विकेट ले गया, टीम सऊदी 1 विकेट ले गया, 1 विकेट अभी 2 विकेट गए हुए हैं, उसके बावजूद भी आप विकेट्स फेंक रहे हो, तो मैं तो फिर हो गया भाई। आप भी किसके ऊपर डिपेंड। पहले बारिश का पूरा सीन था, अब एकदम से बारिश है ही नहीं, पूरी धूप ही धूप है। कमाल हो गई यार। और श्रीलंका कह रही है कि पूरे हमें हराओ। जितने भी काले बादल थे सारे के सारे काले बादल दूर ही चले गए भाई। पूरा आसमान अगर मैं यहाँ पे देखूं भाई सारा का सारा क्लियर है। पहले था कि दूर दूर तक आपको शायद काले बादल देखने को मिल रहे थे, स्लाइड प्रेडिक्शंस थी, अब वो स्लाइड प्रेडिक्शन पूरी तरह से बदल गई है। कुदरत का निजाम 2023 के वर्ल्ड कप में धोखा देकर गया, दे गया। अब नया गाना बनाना पड़ेगा ना, धोखा ट्वीट कर रहा है वो एक्टिवली। इतना झूठा, फरेबी, जालसाज और चालू इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मैं श्रीलंका को इसकी शक्ल देख कितना खुश है, श्रीलंका को सपोर्ट
चीज तो आपने अच्छी चूज की है, बेटे को साथ ही ले आते। बेटे को खुद ही ट्राई कर लेता। लेकर तो आया हूं अपनी बेटी को। जीती रहे तू, कर ले परवाह। चले, हमने करना ये है कि तेरी जीत का सुने, बड़े हो बिस्मा मारूफ बनो। आए बनाएं लड़कियों के लिए और क्रिकेट रोल मॉडल्स। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। कोई नहीं, बर्बाद तो खोलते हो खोलते हुए चुके हैं। दुनिया ने लाइव देखा था। भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर दीजिए भाई। हालत यार श्रीलंका की। यार, ये ये 55 पे आउट ना हो नहीं नहीं जाए। 55 पे नहीं यार, इतना भी नहीं पीछे है। काट लिया। 71 बना चुके हैं। पीछे क्या मिल रहा है? धोखा, धोखा। ठोका ठोका। पीछे कौन सी दुकान लगी हुई थी? पीछे दुकान ही पीछे एंट्री है भाई। अच्छा एंट्री चेकिंग हो रही है, यहाँ से हम लोग अंदर जा रहे हैं। कहाँ है? भाई यहाँ पे तो पाकिस्तान की सारी Entry चीजें gate। चकनाचूर हो गई। 33 एक और for 3 हो गया श्रीलंका यार। नहीं नहीं नहीं, एक और नहीं किया। पर तो भी क्या 33 for बचा 3, है? 34 for 3 हो गया भाई। कुरैशी, वैसे आपकी प्रेडिक्शन ठीक होने वाली है। 39 for 3। अच्छा पिछले लेकिन हम मैच नहीं में है तुम्हारे मैंने लिखा- prediction ठीक हो। हाँ 39 for 3। हाँ पिछले मैच में मैंने लिखा कि भाई जो मैंने बोला था, जब हम साथ में कर रहे थे, जब मैक्सवेल की इनिंग आ गई थी, कुरैशी साहब और मैं कर रहे थे, दोनों अलग कर रहे थे लाइव, तो मैंने बोला भाई मैं तो कुदरत के निजाम पे बिलीव करने लग गया हूँ, बिकॉज न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान में बारिश हो गई और इस वाले में जो मैक्सवेल ने इनिंग खेल दी है तो कुदरत का निजाम ही है। अफगानिस्तान हो गई बाहर। तो मुझको वो लेके लोग लिखने लग गए कि ये वर्ल्ड कप एंड होते होते इस्लाम भी कबूल कर लेगा, ये लिख रहे मुझे। यार मैंने बोला कि मुझे कोई टेंशन नहीं है भाई, सारे हमारे एक ही यहाँ पे सारे मजहब को माना जाता है, हम सारे मजहब को सही बात है। इज्जत देते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो लेकिन खुशी कितनी हो रही थी इनको। हाँ बोलो क्या चाह रहे हो? कुछ तो हुआ है। क्राउड क्या हुआ है? अरे यार नहीं, बहुत please, जोर से शोर आया है। आने दो यार। जब से इस मनूस तुम्हारा आदमी ने श्रीलंका 39 भाई पर श्रीलंका नहीं पहले होगा। 50 पे आउट हुआ, आज भी 50-60 पे लग रहा है। और परेरा अभी तो परेरा स्ट्राइक पे अगर कुछ हुआ है तो 34 पे अगर 4 हो गए खत्म है मैच। छक्का है, छक्का। प्लीज लिख के यार। दे रहा हूँ। छक्का पे कोई ताली नहीं बजा रहा वहां बैठे। छक्के पे क्रिक छक्का रॉकेट कहां से लगेगा इससे? 34 पे 3 इसी को सऊदी सऊदी को पिछले ओवर में 17 रन क्रिक रॉकेट पे देखा नहीं हो आपने? पाएगा भाई इससे। क्रिक रॉकेट पे आप देख सकते हैं। ओए होए शॉट 6 है क्या? बोल रहा हूँ मैं आपको। छक्का। क्रिक रॉकेट बोला मैं बोल रहा था क्रिक अरे रॉकेट। फोन इधर साइड ये में तेज पड़ा हुआ। आदमी है। अच्छी भाई बात है। सच में कसम से फोन साइड में पड़ा हुआ नहीं देखा मैंने। झूठा नहीं, है नहीं। यार। अच्छी बात तेजी है। है। चतुर चालाक। प्रेडिक्शन हो सकती है छक्का मार उसमें। दिया भाई। कुछ खुला हुआ भी नहीं। कुदरत का निजाम अभी भी ऑन है, छक्का मार दिया है। कुदरत हंस रही है लेकिन। यार परेरा अच्छा खेल रहा परेरा है। का दिन है भाई। धोनी। अच्छा खेल रहा है भाई परेरा। धोनी जी की सुपर चैट दिखा दीजिए, ऑस्ट्रेलिया से 2 भेजिए। छक्के 2 चौके मार चुका वो आदमी और वो अकेले- सऊदी को अटैक कर रहा है। अकेला भी क्या कर लेगा? सऊदी सही खेल रहा है भाई यार, छक्का। अकेला यार क्या कर मैक्सवेल यार ने- लक्ष्य छक्का बड़ा प्यारा परेरा मारा है भाई उसने। वो आदमी ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया हुआ है। फिर परेरा अच्छी शॉट, वेरी नाइस चौका। परेरा को जो लोग जानते हैं ना असली श्रीलंकन, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया। कुछ नहीं करेगा ये। एक सेकंड आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। हाँ, तो देखिए अभी थोड़ी देर में विकेट ये- जाएगा। कुशल परेरा भी अपनी विकेट गवाएगा, आप बढ़िया देखना। खेल रहा है। मैं तो कुदरत का निजाम। कम ऑन श्रीलंका। ये परेरा, वाला चीज़ है, कोई न्यूजीलैंड। कमाल खेल रहा है, परेरा। कोई खेल रहा है तुम उसको कितना बोल बाहर रहे आके हो खेल रहा है कि क्रीज से, कितना बाहर। अच्छी बात है ना, चौका मार रहा है। निजाम वाले याद रखो, आज वो भी है आपका रॉकी फर्गुसन। हाँ लॉकी आएगा भी। फर्गुसन भी है भाई, कहाँ से जाओगे? सुपर चैट, किसको प्रीति बची? रणधीर। मोस्ट प्रोबेबली इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल 2019 सेमीफाइनल याद आ रहा है मेरे को तो धक धक हो रहा है। कोई नहीं, बदला लेंगे इस बार। अरे इस बार की इंडियन टीम डरने कुछ की और ही बात है। नहीं। यार देखो हमारे लिए सबसे इजी सेमीफाइनल होगा पाकिस्तान, उससे अफगानिस्तान सबसे इजी अफगानिस्तान होगा। नहीं नहीं अगर अफगानिस्तान आता है। पाकिस्तान से डिफिकल्ट होगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान सबसे 100%। easy हमारा सबसे इजी पाकिस्तान होगा, उसके बाद अफगानिस्तान होगा और सबसे मुश्किल न्यूजीलैंड होगा। आवाज आई है, आवाज आई जा रही है लक्षित जी को। क्राउड से आवाज। पिछले 5 मिनट में बहुत आवाजें आई हैं। जैसे भाई परेरा बड़ा ठोक रहा है इनको, परेरा ही मारेगा। परेरा काउंटर अटैक कर रहा है। परेरा का आज वो नोनी बोल रहा है लव योर वर्क गाइस, लव फ्रॉम पर्थ। अरे लव यू टू यू नोनी भाई फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, थैंक यू ब्रदर। विकेट 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 विकेट। विकेट नहीं जाने। तो जानते हैं उसके ऊपर अपनी बात नहीं हुई कल। चौका वेरी गुड, भाई वेरी गया, चौका हुआ। चौका चौका सारा प्रेशर रिलीज कर दिया परेरा परेरा का ने। है भाई वो 200 की साइकिल से खेल रहा है परेरा। 200 पिछले की ओवर साइकिल। में भी उसने सऊदी को कोई ना कोई चौका कोई ना कोई पाकिस्तान को बचा के जा ही रहा है भाई, कुदरत का हाँ। निजाम तो ऑन ही है। 16 में 35 खेल रहा है नहीं बचा पाएगा। ये आज पाकिस्तान परेरा। को बाद में आएगी, पहले आप खुद की इज्जत तो बचाओ। श्रीलंका इतनी बुरी हाल, कहीं तो जीतो अच्छे से, हारो तो भी कम से कम लड़के हारो, अच्छा खेल देखो शुरू में जितनी मूवमेंट हाँ। मिल गई हाँ
अब यहाँ पे कुटापा सुशांत भाई अपनी उसकी पर बात नहीं हुई यार। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि मोहम्मद हफीज साहब ने जो कल ट्वीट कर दिया। हाँ हम बात कर रहे थे उस पर। फिर चौका भाई, 4 एक और 3 चौके और 1 छक्का मार दिया सर ओवर में पूरा बराबर कर दिया। 12 और 6 18 रन मारे सऊदी के ओवर में। परेरा का दिन होने वाला है भाई 17 बॉलों में 39 भाई यार इमाम की हालत है। क्यों मैंने बोला था स्कोर तो श्रीलंका का बहुत बढ़िया है, बस 3 विकेट चली गई। मैंने बोला था 60 रन बनेंगे, मैंने बोला था कि विकेट गिरेगी। ऑलमोस्ट 9 की रन रेट मेरी भी सही गई है यार। बट कोई नहीं। भाई देखो हफीज साहब को मैंने भी लिखा था कि अगर आप ये बात कर रहे हो तो बाबर आजम से ज्यादा सेल्फिश प्लेयर तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है, जिसने 350 बनाए मर के 80 की स्ट्राइक रेट 75 की स्ट्राइक रेट पे, और तीनों मैच पाकिस्तान हार गया। तो उनका जवाब का वेट कर रहा हूँ। आज माइकल वॉन ने उनकी बड़ी मजाक उड़ाया जो विराट कोहली ने उनको बोल्ड मारा था ना, जब वो T20 मैच में टेस्ट मैच खेल रहे थे 28 बॉलों में 15 रन या कुछ ऐसे थे। तो माइकल वॉन तो उनके 2014 का एशिया कप में वर्ल्ड कप था शायद। पर एक बार आप लोग कंटिन्यू करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। फोन चार्ज कर लूँ, थोड़ा सब चीजें रेडी कर लूँ। आप खाना पीना भी खाएं, आराम से आए। मैं बस 5-10 मिनट में आ जाऊंगा। दिखा दीजिए ओके लक्षित, सुपर चैट दिखा दीजिए। श्रीलंका बढ़िया खेल रहा है, परेरा भी बढ़िया खेल रहा है। यहाँ पर अगर न्यूजीलैंड आ गई सेमीफाइनल में तो आपके लिए सबसे डिफिकल्ट टीम न्यूजीलैंड ही रहने वाली है। नेशनल ब्रो बोल रहे हैं लव फ्रॉम असम भाईजान, थैंक यू ब्रदर, लव टू यू एज वेल। लेकिन अब न्यूजीलैंड भी हमारे सामने सेमीफाइनल में आती है तो आई डोंट थिंक कि इतना नहीं जीतेंगे तो भाई, लेकिन सबसे टफ यही रहेगा। हारी बोल रहे भाई आप अपन कोल पाकिस्तान टीम के होर कोई टॉपिक हुंदा भाईजान, पाकिस्तान दी गल इस वास्ते कर रहे ने बिकॉज आज द मैच डिसाइड करूंगा ना कि पाकिस्तान आंदी है नहीं आंदी सेमीफाइनल, और न्यूजीलैंड के ऊपर भी इसीलिए नजरें हैं। पूरे पाकिस्तानी पूरा देश उनका देख रहा है, आप देख लो जाके। वो सारे के सारे श्रीलंका के पैर पकड़ के बैठे हुए कि आज जीत जाना। और आज देखो सेमीफाइनल डिसाइड होने वाला है, या तो श्रीलंका आएगी या पाकिस्तान, सॉरी या तो पाकिस्तान आएगी या न्यूजीलैंड आएगी या अफगानिस्तान आएगी। और आज का मैच अगर न्यूजीलैंड जीतती है तो पाकिस्तान खत्म, अफगानिस्तान भी ऑलमोस्ट खत्म, मगर अफगानिस्तान तो डेफिनेटली खत्म। तो वही बात हो रही है, पाकिस्तान या न्यूजीलैंड के चांसेस ज्यादा है, इसीलिए बात हो रही है। शॉर्ट बॉल पुल करने गए, मिस कर गए, वाइड मिलेगी क्या? अब आया परेरा वर्सेस बोल्ट। थैंक यू हैरी भाई फॉर सेंडिंग सुपर चैट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। आज तो सोच के आएगा सोच के आया परेरा, या तो बॉल नहीं आता मेरे ही यार। अब आपके बाप के लिए डेड रबर है, आपका पता है, आपको बस अच्छी क्रिकेट खेलनी है, आपको इसी चीज पे फोकस करना, ना आपको जीत हार से फर्क पड़ रहा, ना आपको कोई नेट रन रेट से प्रॉब्लम हो रही है। बाहर हो चुके हो तो खेलो, एंजॉय करो। और आज परेरा का ना एक ही चीज अच्छी दिखी है पूरे टूर्नामेंट के अंदर। परेरा शुरुआत में शेल में दिखे थे, आज इन्होंने अपनी वो नेचुरल गेम खेली अटैक करने वाली, जो कि बेहतर रहा है। हर बॉल पे मार रहा है और कंफर्टेबल लग रहा है। और इस पिच पे आपको पता है कि 400 रन पहले पड़ गए थे और फिर 400 चेज भी होने वाला था, तो रन तो है ही यहाँ पर। लेकिन जब 3 विकेट के चली गई है श्रीलंका की, वो प्रॉब्लम। अगर परेरा आउट हो गया तो मैच ये डेड हो जाएगा। खत्म है। इसके बाद मैथ्यूज वगैरह पड़े हुए। पिछली बार एक लेफ्ट हैंड बैटर न्यूजीलैंड की नैया डूबो गया, रिमोट दियो। इस बार भी एक लेफ्ट हैंड बैटर, वो बस फिर 50 ओवर खेलने की सोचेंगे। फखर जमान लेफ्ट हैंड बैटर, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड बैटर है कुशल परेरा। मुझे क्यों लग रहा है कि परेरा 50 से पहले है। नहीं परेरा का होगा आज यार। नहीं परेरा बढ़िया खेल रहा है भाई, नो डाउट। परेरा खेल रहा है, परेरा अटैकिंग बहुत ज्यादा अटैक कर दिया है। और न्यूजीलैंड भी तो जान हथेली पे आ गई होगी भाई। न्यूजीलैंड का भी तो टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा अगर हार गए तो, उनके भी तो प्रेशर आएगा न्यूजीलैंड पे। 3 विकेट आगे नहीं आगे, लेकिन ये तो मारे जा रहा है। ले फिर चौका, अरे यार टॉप एज का चौका, धड़कन किस्मत धड़कन बढ़िया चौका जी। यहाँ पे फिर से 57 पर 3 लग रहा है। फाइट हो रही है श्रीलंका की तरफ से। रन रेट देख लो 8.34, 20 पे 43। वही तो मैं बोल भाई रहा हूं, रेट बराबर कर दिया मार चुका है इसने, जो पहले आपकी हालत खराब थी सब बराबर कर दिया। पता नहीं 3 और विकेट ट्रेंट बोल्ट हो जो भी हो यार, सबको पड़ रहे हैं रन्स। विकेट गिरने के बाद भी कुशल परेरा रुका नहीं है कि क्या होता है ना, प्रेशर आता है थोड़ा प्लेयर पे कि रुक के खेलता है, ये रुक के खेल ही नहीं रहा। परेरा भाई 200 की स्ट्राइक रेट से ज्यादा। मुश्किल अश्कों को शॉट, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ क्रिक शॉट। रॉकेट लो इसके हाथ से। ये कमीना क्रिक रॉकेट देख रहा है ना, देख रहे हैं क्रिक रॉकेट लगा हुआ है। जान से मार दूंगा मैं क्रिक रॉकेट। वो तो अभी भाई आप लोग देख सकते हैं क्रिक रॉकेट इसको अलाउड नहीं है। आप लोग क्रिक रॉकेट में पहले देख लीजिए, देखो इसको पहले ही पता था, इसलिए गाने गा रहा है बैठ के। चलाक लोबड़ी बंद कर दिया मैंने, अभी मैंने खोल अरे यार मार के ठोक दिया परेरा ने। इन्होंने परेरा की बात की थी ना इमाम ने। इमाम जब से यार मैंने 3 विकेटें बोली, आपने उसके लिए अप्रिशिएट नहीं करा। मैंने कहा था कोलैप्स होगा 3 विकेटें आपने नहीं बोली थी, आपने बोला था विकेट। मैंने कहा था हाई विकेट आएगी, विकेट आई, लोग कंटिन्यू करिए। विकेट आई। ओके जी, आपने जो बोला है वैसा हुआ ही नहीं कभी। क्यों विकेट नहीं
अभी यार 3 विकेट नहीं आई। एक विकेट आना और आप 3 विकेट 3 बार मैंने बोला था कि शुरुआत में विकेट आएगी और 3 विकेट लगातार आई है, लगातार आई है। और परेरा भी चलो ठीक है, आप कह रहे हो कि शुरुआती फेज में कि चल जाएगा, अभी रुकिए, आप सब्र कीजिए। हाँ रुकिए तो सब्र का फल जो होता है वो बहुत मीठा होता है। आप क्या चाह रहे हैं 100 पे ऑल आउट हो जाए श्रीलंका? नहीं तो क्या मतलब? नॉट पॉसिबल। चलो 150 150 पे भी नहीं। परेरा आउट हो जाए 150 पे 4 आउट हो जाए सही। श्रीलंका 300। परेरा ने जो खेल गया है, परेरा आज खत्म, उसका दिन खत्म। आज वो परेरा परेरा की और- सेंचुरी है। परेरा और 10 ओवर टिक जाए, श्रीलंका बहुत अच्छी परेरा की पोजीशन में आ सेंचुरी है जाएगी। भाई, सेंचुरी। चारू आज आप ऐसा लग रहा है कि नेदरलैंड्स की सपोर्ट में खेल नहीं रही नेदरलैंड्स, लेकिन आप नेदरलैंड्स के सपोर्ट में आज कोई बात नहीं, लगने को बहुत कुछ लगता है पर होता नहीं है जो जो लगता है। नेदरलैंड्स कहाँ से आए, बेचारे बाहर हो गए हैं। चौका। बहुत बढ़िया गुड है, शॉट बहुत बढ़िया। श्रीलंका। श्रीलंका ने तो पिछले मैच में भी प्रूव कर दिया था, चारों मेरे को लग रहा है आपकी भी तबीयत नासाज है। सेंचुरी। अच्छा आपकी भी खराब है तबीयत, मतलब सबकी तबीयतें नासाज हो गई हैं, इंक्लूडिंग बीमार यार। हाय अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं, बट कोई बात नहीं। मिस कर रहा था मैं काफी दिन। दिवाली आने वाली है, कल पता है आ गई, आ ही गई बड़े almost। मुश्किल से दिन कटा है मेरा। आ जाते हैं क्या किया आपने अपने घर में जब आप खाली बैठे थे उस समय में, कैसे अपना समय बिताया? कुकिंग की। क्या बात है, क्या पकाया? तो जब क्या बनाया मैंने आपने? राजमा बनाए थे, वाओ, बहुत बढ़िया। लाने चाहिए थे यार, कल बनाए थे ना। तो आज भी बना लेते। राजमा देखो ऐसी चीज है, आज टाइम नहीं मिला। राजमा ऐसी चीज है जो हर घर में पता है क्या होता है कि दोपहर में बनते हैं और वो रात को भी यूज होते हैं, तो राजमा की यही होती है। राजमा का तो आप ले आते आज भी हमारे लिए, हमें क्या बुरा लगता है बताओ। चार राजमा बनाए थे सुबह, आई मीन 11-12 बजे के करीब। फिर उसके बाद शॉट। वाओ, 50 हो गई, परेरा भाई, कुशल परेरा 50 हो गई। वेरी गुड। देखो 9:30 के आसपास की जनरेट आई है। 231 की स्ट्राइक अकेले रेट। बंदे ने। परेरा 3 विकेट गिरने के बाद प्रेशर नहीं आया, बड़ा खिलाड़ी। 22 बॉल पर Good one. 51, गुड वन, गुड अल्टीमेट। अभी तक खेल अच्छी है, अब लंबा लेके जाना इस पारी को, जैसे फकर जमान लेके गया था, तो लंबी पारी। उसके बाद शाम को मैंने खिचड़ी बनाई थी अपने लिए क्योंकि तबीयत खराब थी। ओए यार। बट इनकी बॉलिंग की पिटाई हो ही रही है, पर यहाँ पे तो खैर स्टेडियम मैदान पे तो वैसे भी। उसके बीच में मैंने किताबें पढ़ी थी 1-2 कल, फिर मैंने वेब सीरीज भी देखी थी। अगर आपने स्कैम 2003 देखी हो, देख लिया, देख ली है? तेल की स्कैम। आते ही देख ली मैं तो, जिस दिन आई थी रिलीज हुई थी उस दिन ही सारे एपिसोड्स। वैसे मेरे को स्टोरी पता थी लेकिन और देख रहा था तो स्कैम देखी। Interesting है यार, बहुत बढ़िया थी। आई मीन कुछ एपिसोड बचे हुए हैं अभी भी। उसके बाद फिर शाम को मैंने थोड़ा सा नॉकिंग की घर में ही। ओहो हो, मेरी एक पूरी लॉबी है जहाँ पे सिर्फ बैटर बॉल से मैं अकेले ऐसे करते रहता हूँ, तो वो किया। उसके बाद फिर बट कल ऐसा एहसास हुआ कि समय काटने को दौड़ रहा है, क्योंकि इतनी सारी चीजें कर ली मैंने, फिर भी टाइम कट ही नहीं रहा निकलता था। नहीं है। निकल ही नहीं रहा था। एक तो आप अकेले ऊपर से देन मेरे बीमार को हो, रियलाइज हुआ कि ऑफिस चलना चाहिए, ठीक होना चाहिए। तो तो तुम फिर मैं उसी टाइम आ जाते। आज आ गया। नहीं कल फिर मैं उस टाइम आया था, कल वैसे भी पूरी तरीके से तो ठीक था भी नहीं, बट टाइम लग रहा था कि जब आप अकेले होते हो खाने को बहुत ज्यादा दौड़ रहा है टाइम, मतलब चारों तरफ से बाहर जाऊं तो सारे लोग जितने भी मेरे दोस्त सब ऑफिस है ना, जिस सारे दोस्त यार सबका टाइम आने का अलग अलग है, और किसी से भी बात घर पे थोड़ी बहुत कर ली तो कर ली, तो वही था। पूरा दिन क्या करो ना, वही तो पूरा चीज हो दिन क्या जाती है। करते हो? अच्छा जब घर पे होते हो आप, आई मीन मम्मी पापा एंड ऑल फैमिली के साथ होते हो तब कट जाता है, तब तो पता नहीं चलता टाइम यार, तब पता नहीं लगता है। बहुत जल्दी कि भागता आप है। जो है यू नो टीवी देख ली, कुछ कर लिया, अब कितने टाइम कितना देर आप फोन देखोगे? वही है यार। चलो भाई क्या कहते हैं श्रीलंका वालों, कम ऑन परेरा। खाना खाया आप लोगों ने? खाना नहीं यार, खाया। खाना खाने का खाना इंतजार, मैंने भी नहीं खाया। खाना खाने का इंतजार कर रहा हूँ मैं अभी। सुबह से मैं किसी जरूरी निजात काम से लेके गया था। खाएंगे खाना फिर थोड़ी देर बाद। ओह गुड बॉल। मैदान अच्छा है यार चिन्ना स्वामी में। मेरा वो कहते हैं ना कि कुछ स्टेडियम्स होते हैं, कुछ ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पे आपको मैच देखने का बड़ा मन है, तो मेरा वो चिन्ना स्वामी का मैदान है और आरसीबी का मैच मुझे यहाँ देखना है फॉर श्योर। कुशल परेरा यार क्या कभी ना खेला कभी। है अभी तक, 9 चौके 2 छक्के। ये देखो परेरा ने यार, बट जो मारा है, आई मीन जो प्रेशर बनाया था श्रीलंका के ऊपर
वो सारा प्रेशर जो है वो रिलीज हो गया। सही बात है। ये बैट लगा है सामने तो है वैसे यार, और मेरे ख्याल से ऊपर से निकल रही है। मेरे ख्याल से ऊपर से निकल जाएगी। केन विलियमसन कंफ्यूज, DRS जरूर डीआरएस के लिए DRS जाएंगे नहीं जाएंगे, ट्रेंट बोल्ट पूछ रहे हैं भैया, कंफ्यूज, कीपर से ले लिया डीआरएस ले लिया भाई, एलबीडब्ल्यू के लिए बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है, रियल टाइम क्लोज बहुत है, बट मेरे को लग रहा है रियल टाइम ऊपर से निकल ऊपर या अंपायर्स कॉल, अंपायर्स कॉल हुई तब भी कोई हक में डिसीजन नहीं जाना, हालांकि रिव्यू बच जाएगा आपका, बट जो लग रहा है मुझे भी रियल टाइम ऊपर से निकल गई बॉल। नॉट आउट है। हो सकता है बल्ला भी लगा हो। श्रीलंका अगर आउट हो गया यहाँ पे ना, अभी तक तो वही देखा है भाई कि वन मैन शो चल रहा है बस। पर हाँ इट्स परेरा वर्सेस न्यूजीलैंड, बल्ला लगा नहीं, बल्ला तो नहीं, बैट नहीं लगा। ऊपर से निकल जाएगा यार, अंपायर्स कॉल बच जाएगा। अंपायर्स कॉल है ये, अंपायर्स कॉल लग रही है मुझे, देखते हैं भाई बॉल ट्रैकिंग, विकेट्स मिसिंग है, अंपायर्स कॉल बॉल या ट्रैकिंग अंपायर्स कैसे कॉल होती होगा। है, बैट तो नहीं लगा, बैट तो नहीं लगा है, बैट से बहुत दूर है, देखो ना आप, टॉप स्टंप दिख रही है यार, घुटने से ऊपर लगी है बॉल। रिव्यू खराब, अंपायर्स कॉल हो तो बच जाए रिव्यू। आउट, हिटिंग विकेट भाई, रिव्यू सक्सेसफुल हो गया, श्रीलंका वापस जाते हुए, चलो भाई। और श्रीलंका का बच गया है डंका। अबे कोई तो खड़ा हो जाओ परेरा के साथ। 70 पे 4 भाई, परेरा, मैं यही कह रहा था कि परेरा भले ही अच्छा खेल ले, अप्रिशिएटेड, उसकी पारी को अप्रिशिएट किया जाएगा, पर वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा जब दूसरे एंड से विकेटें जाती रहेंगी, लगातार विकेट्स गंवाते रहेंगे, साथ तो देना पड़ेगा ना। और श्रीलंका बड़ी विकेट भाई, पिछले मैच में 100 बनाया था श्रीलंका ने, और समन विक्रमा में विकेट गवा गया, कुदरत का तो जो फॉर्म में थे सब गए, निजाम नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है, आज कुदरत का इंतकाम होने किसी वाला है। एक को तो भाई आज वहाँ पे मैं खड़े अपना- होके एंकर करना, रोल प्ले करना पड़ेगा, जैसे उस दिन पैट कमिंस ने कहा था, भूल जाओ टेस्ट मैच खेलो, अब मार रहा है ना बंदा, एटलीस्ट खड़े तो रहो। 10 भाई अभी मिनट 8वां ओवर चल रहा है, 9वां ओवर चल रहा है, चारू हाथ दो भाई, कोबरा मैं वही जी, तो कह रही अभी हूँ, तो 9वां क्या ओवर कर चल लेगा रहा है। अकेला बंदा है? ठुकरा के मेरा प्यार, विकेट तो संभाल के रखो एक बंदा, कुदरत का इंतकाम देखिए, कुदरत गला का यार, इंतकाम, काफी निजाम, व्हाटएवर जो भी होगा, खराब बट हो मैच तो रखा है आपके लिए अच्छा हो कम से कम। खत्म कर दिया, वन साइडेड ठुकरा छोड़ना के रोगे। मेरा प्यार कुदरत का इंतकाम देखेगी, भाई देखना आप। सीरियसली यार, पानी दा थोड़ा पानी दे। श्रीलंका दा रंग देख के श्रीलंका दा आपको जी देख के अखियां जो अंजू नूर दे, गलत सलत गाने गाते रहते हो। क्यों? असलंका ना चलदा मेरा, असलंका ना चलदा, एंजेलो मैथ्यूज भाई, इनसे भी एक्सपेक्टेशंस हैं। परेरा ही चल। अरे वाह, आज तो इतना टाइम पे आ गए एंजेलो मैथ्यूज, मजा आ गया देख के, टाइम पे आया अरे वो तो यार घटिया हरकत थी, आज, और वो भी हेलमेट की वजह से टाइम तो खराब बढ़िया हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था, वो भी घटिया लोग, घटिया हरकत। जो भी है चलो। अरे दो यार, शाकिब से पहली बार दर्द देखने को मिला यार, वो विट्टे उखाड़ के जो उनका आई थी, वो वीडियो वायरल हुई थी, वहां पे खराब हरकत, हो माहियाना आया मेरा एक्सपीरियंस भाई, परेरा और मैथ्यूज, श्रीलंका का अगर एक्सपीरियंस की बात करें ना, अगर टीम में पूरा एक्सपीरियंस बैटर्स कौन है, आपका एक्सपीरियंस इस वक्त क्रीज पे है, अगर आपके एक्सपीरियंस में से एंजेलो मैथ्यूज ने या फिर परेरा ने विकेट गवा दी, आपका मैच गया, और स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट विकेट परेरा की अब यहाँ से, और परेरा प्रेशर में आ सकता है कि भाई 4 विकेट गिर चुकी है, और इनको पता है कि नीचे ज्यादा बल्लेबाज है नहीं, और आपको अगर डीप नहीं लगेगा गेम को, तो जो आप बैंगलोर के मैदान पे स्कोर देख रहे हो 320 330 दोस्तों, न्यूजीलैंड, नॉट पॉसिबल। क्रिक रॉकेट को डाउनलोड कर लीजिएगा, फास्टेस्ट क्रिकेट अपडेट्स मिलती है, निवेद के साथ टेस्टी एंड हेल्दी स्नैक्स मंगा लीजिए, नंबर भी दिए हुए हैं, और स्टेक के साथ आप उनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं और चीयर कर सकते हैं टीम इंडिया को। कमेंट कीजिए, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी आप जो है वो ज्वाइन करें। कोबरा, आपने हमारा दिवाली का गिफ्ट तैयार कर लिया? नहीं, क्यों आप हमें दिवाली का गिफ्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? बड़े बुरे हैं। डायनामिक गेमिंग बोल रहे हैं, कोबरा बिग फैन, एक बार बाबुल सॉन्ग हो जाए। यार मेरे को आता नहीं है, बस एक ही लाइन आता है, बाबुल की दुआएं लेती जा, बाबुल तुझको सुखी की संसार मिले, दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार। अरे मत कहो इन दोनों से भाई, मेरा सर खा रहे हैं दोनों यहाँ बैठ के। आगे आता नहीं यार, कोई बात नहीं, अच्छी बात है नहीं आता, थैंक गॉड तुम्हें नहीं आता आगे।
कम ऑन मैथ्यूज। अच्छा ये दोनों तरफ से मारने लग जाए तो उधर से मैथ्यूज उधर से परेरा। मैथ्यूज टाइम लेगा, उसी मैथ्यूज तरीके से टाइम लेने वाला दोनों बैटर है, तरफ वो आगे पिटाई नहीं बट करेगा। अभी आपकी सिचुएशन ये है कि आप ठंड पाओ भाई, ठंड रख, आराम से सेटल हो जाओ, कुशल परेरा को मारने दो। अभी चारू बोलने वाली थी कुशल को परेरा को मारने दो। कुशल परेरा को मार रहे तो कि भाई तुम बना रहे हो, तुम बनाओ। आपकी फेवरेट केएल राहुल, बहुत से लोग फेवरेट है मेरे। चलो उनसे हार्दिक पांड्या, हो इंडिया का मैच 12 दिवाली वाले दिन है ना। ये देखिए अच्छा खासा ब्रेक मिल 3 गया मैचों की टीम T20 सीरीज 10 दिसंबर से है, 10 इंडिया वर्सेस दिसंबर साउथ से। अफ्रीका, पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ में है, फिर फिर साउथ अफ्रीका के साथ में है। फिर जनवरी में टेस्ट सीरीज है मेरे ख्याल जितना मुझे याद है इंडिया और इंग्लैंड की। काफी कुछ है। क्रिकेटिंग फीवर लगातार, और फिर क्रिकेट नॉन स्टॉप ही चलता आप है। देखते रह जाएंगे और कुछ ना कुछ होता आईपीएल आ ही जाएगा, रहता फिर है। देखते रहेंगे आप, आईपीएल आ जाएगा फिर T20 वर्ल्ड कप होगा, T20 वर्ल्ड कप, पता ही यस नहीं चलेगा। जून के महीने के अराउंड जितना मुझे याद है। लेकिन अभी नजरें 19 नवंबर पे, 19 नवंबर से पहले तो ये है कि आज पता चले, फिर 11 नवंबर को पाकिस्तान का क्या होता है वो पता चले, फिर सेमीफाइनल में हम देखें कि भाई सेमीफाइनल में कौन जीत रहा है, कौन फाइनल जा रहा है। चलिए चल मुड़िए सजन। सुन रहे हैं आप आवाज, तबीयत खराब है लेकिन जो सुर है वो यहाँ से यहाँ नहीं हिले, सब एकदम लाइन में, एकदम बहुत बढ़िया। कम ऑन लॉकी फर्ग्यूसन ले आए इन्हें परेरा के सामने। फर्ग्यूसन अच्छा है, स्ट्रांग हो गई इनकी टीम। देखो प्रॉब्लम नहीं होगी न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड जीत जाएगा, पर यही है ना कि श्रीलंका थोड़ा तो रेजिस्टेंस दिखाएगा ना, श्रीलंका थोड़ा तो वहां पे टिके। ये विकेट नहीं, अरे मिस गॉन परेरा। मैं यही कह रहा था भाई, मैं यही कह रहा था, आप प्रेडिक्शन सही हुई। मैंने कहा था भाई, मैंने यही बात कही थी कि 50 बना दोगे, 51 बना दोगे, आप पूरी तरह से कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाओगे, और यही हुआ। यही मैं कह रहा था, 70 पे 5 आपका फिर सेट बैटर जो इकलौता शुरुआत से लड़ रहा था न्यूजीलैंड से, वो आपका 51 रन पे विकेट गवा चुका है। परेरा की मंशा साफ थी कि भाई मैं यहाँ पे आऊंगा, मुझे हार्ड हिटिंग करनी है, दैट्स इट, बाकी सारे गेम चलाएंगे। गेम साइड से कोई चला नहीं पाया, परेरा हाई प्रेशर में, और शॉट खेलते वक्त सैंटनर के हाथ में सीधा कैच दे दी, लॉकी फर्ग्यूसन को लगाया था। जो आपने पैतरा खेला, केन विलियमसन ने विकेट ले गए, और मैंने शुरुआत में कहा था कोलैप्स लोडिंग 70 पे 5 है भाई यहाँ पे, और यहाँ से मुझे दिख नहीं रहा है कि कुदरत का निजाम जो है आपका, उसका 0.01% चांस भी है। बहुत मुश्किल है, क्योंकि 70 पे 5 यहाँ से कोई बड़ा स्कोर दिख नहीं रहा। चारू खत्म है, खत्म बैटिंग। अब आपके लिए रन्स कौन बनाएगा? एक एंजेलो मैथ्यूज का नाम आप रख करके ले लो, उसके अलावा कौन है? कुछ नहीं बचा अब श्रीलंका की बैटिंग में। तो प्रॉब्लम यही है कि जब आपको दिख रहा है कि टीम की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, जब आपको दिख रहा है कि आपके अलावा कोई है नहीं अब बैटिंग करने को, रन्स बनाने को, और इतनी खराब सिचुएशन में भी अब आपको ये तो था नहीं कि भाई जीत करके क्वालिफाई करना है या कुछ और करना है आपको, बस आपको थोड़ा वहां पे टिक जाते 50 ओवर निकालने हैं यार, कौन खेलेगा? फिर वही होगा, 25 ओवर 30 ओवर में सब ऑल आउट हो जाएंगे, फटाफट से न्यूजीलैंड चेस कर लेगी, खत्म। लोग इतने टाइम से सोच रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं, ये होगा वो होगा, मैच में ऐसा कुछ होगा, कुछ नहीं बचा। श्रीलंका फिर से सरेंडर। सुपर चैट आई भी भाई, दिखा दो यार फटाफट, सुपर चैट के बारे में बात कर लेते हैं। शिवांश जी की सुपर चैट आई है। बट श्रीलंका यार इतना ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। नाउ अच्छा पाकिस्तान खासा ऑलमोस्ट परेरा आउट, खेल रहा रवि था। सिंह कह रहे हैं। हां भाई पर बहुत मुश्किल धनंजय है। डी सिल्वा हैं आपके लिए अभी, पर वही बात है, अपने विकेट 5 खो दिए, 70 रन, ओवर अभी 10 भी नहीं हुए हैं, रन्स खूब आ गए हैं, एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू कुशल परेरा। पर उसके हिसाब से फिर आप देखो तो विकेट 5 है आपके पास, बचा कुछ नहीं है। लास्ट पेयर है आपके लिए, फिर कौन क्या कह रहे हो? वर्ल्ड कप फिक्स है भाई, कहाँ है यार? फिर वही बातें शुरू की फिक्सिंग वगैरह वाली। 5 विकेटें जा चुकी है, श्रीलंका की हालत यही है। ये देखिए शिवांश चौधरी जी कह रहे हैं कि अब तो कुदरत के निजाम ने भी शर्म कर ली है, पाकिस्तान कब करेगा? पाकिस्तान, कुदरत का निजाम हंस रही है, कुदरत ऊपर से तुम्हारे ऊपर। यार ये तो बहुत हंसने वाली बात है। श्रीलंका की टीम, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो, मैं तो श्रीलंका की परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। Exactly. मतलब भाई आप इंडिया के सामने इतना खराब खेलते हो, आप आ जाते हो, आप न्यूजीलैंड के सामने फिर इतनी खराब परफॉर्मेंस देते हो। इतनी खराब टीम तो नहीं थी श्रीलंका, क्वालिफायर्स में अच्छा खेली थी वर्ल्ड कप के, दासुन चन का जब कप्तानी कर रहे थे श्रीलंका अच्छा खेल रही थी, लेकिन आप यहाँ पे इस तरीके से खेल रहे हो।
नॉट एक्सेप्टेबल यार, नॉट ने एक्सेप्टेबल। लगाया शॉट भाई, इनकी अभी तक जो दिखाई दे रहा है उससे ये पता चल रहा है कि विकेट्स जा रहे हैं, विकेट्स हम रन बनाएंगे तो भी जाएंगे, शायद डिफेंस करेंगे तो भी जाएंगे। तो आओ लगाओ शॉट्स, रन्स बनाओ, एटलीस्ट बोर्ड पर रन्स तो रहेंगे, भले 50 ओवर ना खेल पाए, 30 ओवर के अंदर अंदर ऑल आउट हो जाए, हमारे पास कुछ रन्स तो होने चाहिए। मगर अभी 10 ओवर भी नहीं हुए, 10 ओवर हो जाएंगे अभी, और फिर उसके बाद क्या आप 20 ओवर और निकाल लोगे? इनको दोनों पासे उल्टे पड़े, पता है। इंडिया के सामने अगर मैं आपको मैच याद दिला दूं, इंडिया के सामने ये लोग अटैक करने नहीं जा रहे थे, इंडिया के सामने ये लोग थोड़ा सा ना विकेट बचाने की कोशिश कर रहे थे शुरुआत के 10 ओवर्स में। वहां इन्होंने विकेट गवाई, तो इनको लगा कि शायद हम अटैक करके खेलेंगे तो मे भी विकेट्स ना गवाए। अब इन्होंने आज के मैच में अटैक करके खेला शुरुआत से, तो भी विकेट गवा दी। तो मैं ऐसे भी विकेट गवाऊंगा, मैं ऐसे भी विकेट गवाऊंगा, तो मैं बचूंगा नहीं। बस यही वाली बात है, मैं क्रीज पे नहीं रहने वाला। नहीं, आपको कंडीशंस को देखते हुए आपको अपने आप को स्विच करना पड़ता है। जैसे विराट कोहली ने उस दिन कहा कि मुझे मैसेज आया था आपको डीप तक बैटिंग लेकर के जाना है आपको, हाँ। तो वो आपको देखते हुए हालातों को फिर अपना गेम को उस हिसाब से आगे लेकर के जाना चाहिए। यहाँ पे वैसी प्लानिंग नजर नहीं आई कि कुशल परेरा है तो उनको नीचे तक लेकर के जाना है, बाकी के आएंगे वो रन्स बनाएंगे, वो सब कुछ भी वैसा नहीं दिखाई दिया। प्लानिंग नहीं है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। श्रीलंका ने इतना ज्यादा खराब किया, इतना डिसअपॉइंट किया इस बार, तो इतना खराब एक्सपेक्टेड नहीं था। शेख जी कह रहे कि भाई ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच याद है, आज भी कुदरत का निजाम होगा इंशाल्लाह। भाई देखते हैं यार, लेट्स सी। कौन करेगा? बहुत मुश्किल है। वो एक नाम बता दो मुझे। वो आपका बहुत सारे मैचेस में ऐसा एक मैच आता है जहां पे ऐसा हो सकता था। Seriously? ये वाला मैच मुझे नहीं लगता कि होगा। बैंगलोर की पिच आप कंडीशंस भी तो देख लो ना यार, कंडीशंस कोई इतनी अच्छी तो है नहीं बॉलिंग के लिए। वही बात है ना। और अगर आप न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बॉलर्स कंपेयर करेंगे तो आप न्यूजीलैंड के बॉलर्स को ज्यादा बेटर कहेंगे यार, फॉर श्योर। हाँ, बहुत सारी चीजें। मैथ्यूज हैं, देखो क्या करते हैं। इंडिया फिक्स है 110%। अरे भाई यार, जब आपको बाहर होने की सिचुएशन बन जाती है या आपकी टीम हार जाती है तो मैचेस फिक्स कैसे हो जाते हैं एकदम से? अरे बोलने दो यार, सुपर चैट आई तो सुपर चैट दिखा दो। बोलेंगे खैर, बोलने में क्या। कुदरत का निजाम भैया, कुदरत का निजाम नहीं है, कुदरत का इंतकाम है। श्रीलंका 72 for 5, गुड शॉट मैथ्यूज का ये। यार अभी आप देखो ना, श्रीलंका पता नहीं क्या सोच के आया आज कि 10 ओवर में 80 रन के आसपास ये लोग पहुंच गए, बट रुक ही नहीं रहे, कोई क्रीज पे खड़ा होना ही नहीं चाह रहा। भाई टाइम लो, पार्टनरशिप बनाओ, तो उसके बाद बड़ा स्कोर आप बना सकते हो। भाई 30 ओवर में 200 भी बना लिए तो क्या फायदा, उन्हें तो 50 ओवर में 200 चेस करने ना। आप तो ओवरऑल पिक्चर देखो ना, फायदा क्या है उसका। तो कोई पार्टनरशिप बनाने को आज तैयार ही नहीं है, पता नहीं क्या सोच के आए हुए हैं। बट लेट्स सी, देखते कि अब मैथ्यूज है और डिसिल्वा है, लास्ट बैटिंग प्लेयर है। इसके बाद आप चमिका करुरत्ने, तीक्ष्णा वगैरह पड़े हुए हैं, ये लोग वैसे ही ताश के पत्तों की तरह चले जाएंगे। लास्ट बैटिंग प्लेयर है, लेट्स सी, देखते हैं कि लास्ट बैटिंग प्लेयर कब तक जाते हैं। यार आप एसी बंद कर दें इमाम, आपकी तबीयत खराब है फिर भी आप एसी चला के बैठे हुए हैं, जरूरत क्या है एसी की? लोगों की डिमांड आ रही है कोबरा। किसकी डिमांड आ रही है? लोग कह रहे हैं कि टेपिया वाला गाना गा दो प्लीज। ना, लोगों ने इतने दिनों से सुना नहीं, आप इतने दिनों बाद पाकिस्तान आए का हो। मैच है ना, उस कुछ दिन तो उनके लिए तोहफा होना चाहिए। कुछ भी हो रहा है, कुछ भी चल रहा है, खेल कोई रहा है, हार कोई रहा है, जीत कोई रहा है, रिएक्शन किसी के आ रहे हैं, मतलब खिचड़ी पका दी है। इसके बाद पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा सीधे कराची के लिए, वहां पर आप कुदरत करें। नहीं, सेमीफाइनल देखने आएंगे ये लोग। नहीं, हमें नहीं दिखवाना, यही रोक लेते हैं ना, यही तो है कि सेमीफाइनल देख जाओ यार, देख के जाना। बिरयानी खा के जाओ, इमाम उलग को मेहमान प्रोटीन खिला के अरे भेजेंगे। बहुत बिरयानी खा ली भाई, इमाम उलग को बहुत हिंदुस्तान में प्रोटीन मिल गया, नहीं रखना अहमदाबादी अब आप बिरयानी जाइए। फाइनल में हमें, नहीं रखना आप, काइंडली प्लीज आप निकले। बात तो सही है। जबरदस्ती रुक गए वो तो। वर्ल्ड कप आपका कैंपेन खत्म, निकले अब आप। बोल रहे हैं हम नहीं जा रहे। इसीलिए तो उधर से लोगों को कब हम बुलाया गया रुकेंगे। था ना, कि कुछ लोगों का रुकने का ही प्लान था। बट खैर अलग बात है वो। पाकिस्तान की टीम तो वापस जाएगी। यहाँ पे ये लोग कुछ कर ले यार, श्रीलंका वाले। श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा हूँ मैं आज। हालत तो कुदरत का निजाम नहीं है इतना, बट श्रीलंका भी कह रही है भाई कि सॉरी, हमसे ना हो पाएगा। वी डोंट वांट के पाकिस्तान आए, हम उन्हें भी तो मतलब डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। वही वाली हम बात तो है। डूब गए, तुमको भी डुबाएंगे। श्रीलंका डूबी नहीं है, श्रीलंका बहुत ज्यादा डूब गई है जिस हिसाब से खेली है। श्रीलंका सच में बहुत खराब खेली है। श्रीलंका डूबी है समंदर में, समंदर ऐसे इंडियन टीम सामने आ गई।
साउथ अफ्रीका आ गई। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वो नाले तालाब में में? डूबे हैं, तो चुल्लू पर पानी में कौन डूबा है? वो नाले में डूबे हैं। चुल्लू पर पानी में कौन डूबा है, ये बताइए। चुल्लू पर पानी में इंग्लैंड डूबी है, वो नाले में, सीवर में। उनको सांस भी नहीं मिली। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, कौन सी मेरे को याद नहीं है। देखिए कौन सी मैं गैस ह्यूमैनिटीज होती से हूँ तो मुझे ज्यादा इसका है। तो एकदम उड़ गया बेचारों का, इसी वजह से एक हालत खराब हो गई। कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? आपने साइंस पढ़ी हुई है? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। क्या तुम्हारी हाँ, नहीं साइंस थी? स्टूडेंट। नहीं मैं 11th में मैंने ह्यूमैनिटीज पढ़ी है यार। ह्यूमैनिटीज, बट ह्यूमैनिटीज में मेरा बड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन उस टाइम पे इतना दिमाग चला नहीं। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ह्यूमैनिटीज ही लेनी, इंटरेस्टिंग थी वैसे ह्यूमैनिटीज। हाँ ह्यूमैनिटीज ही मेरे को लेनी थी। बाद में आफ्टर 12th मेरे को रियलाइज हुआ कि कुछ नहीं रखा है, बट खैर साइंस पढ़ा, साइंस में और इंटरेस्ट है। अगर एक बार साइंस में इंटरेस्ट आ जाता है तो फिर सब चीज़ें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ही दिखती है। फिर बहुत आपको जल्द 3D स्पेस दिखता है, आपको क्वांटम फिजिक्स दिखती है। केमिस्ट्री में मैं थोड़ा वीक था। केमिस्ट्री, फिजिक्स आपकी अच्छी थी। फिजिक्स ऑफ कोर्स, फिजिक्स मैथ में बहुत जल्दी कोबरा भाई का लॉ आने वाला है, फर्स्ट लॉ ऑफ कोबरा। फिजिक्स और मैथ मेरे फेवरेट थे। सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट मेरे चारों की भी वही थे फेवरेट थे science में। मैथ्स। नहीं, मेरी मैथ फेवरेट नहीं थी, लेकिन यहाँ पे अगर आप मैथमेटिक्स लगाएं, अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड की टीम जीत चुकी है ये मैच आराम से। यहाँ से श्रीलंका हार करके 200 रन पहुंच जाएगा, न्यूजीलैंड जीत जाएगा। न्यूजीलैंड जीत गया सिनेरियो में आपके लिए इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल होने वाला है, जो 15 तारीख को वानखेड़े में मुंबई में होगा। क्योंकि पाकिस्तान अगर आती तो आपके लिए कोलकाता में कराया जाता, अदरवाइज मुंबई के वानखेड़े में इंडिया खेलेगी, जो भी सेमीफाइनलिस्ट टीम आएगी। अब यहाँ से न्यूजीलैंड भाई हो गई है, न्यूजीलैंड सुपर चैट है, दिखाना इनकी अब थ्रू हो चुकी है यहाँ पे न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट आपके लिए एक तरीके से औपचारिकता है इनकी बैटिंग की। अगर बात करें श्रीलंका की, पूछो भाई जीशान कुछ इकबाल। दम बचा हुआ नहीं है, तो इट इज ऑलमोस्ट कंफर्म्ड। और फिर अगले मैच में पाकिस्तान को बहुत कुछ करना पड़ेगा जीतने के लिए, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो पाकिस्तान की भी दुआएं कबूल हो सकता है, नहीं है। तो इट्स इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया यहाँ पर कि 15 तारीख को मुंबई में वानखेड़े में इंडिया और न्यूजीलैंड होगा। स्टिल अभी गेम पड़ा हुआ है, कल का गेम भी है, देन अफगानिस्तान गेम भी है, बट कंफर्म यही है। यहाँ से इस गेम के बाद हम कह सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड की नेट रन रेट आप देख लो, भले ही अफगानिस्तान 10 पे पहुंच जाए, श्रीलंका पाकिस्तान 10 पे पहुंच जाए, बट नेट रन रेट न्यूजीलैंड का क्योंकि बेहतर है। और आज का गेम जैसे वो जीतेंगे, 5 विकेटें चले गए तो और बेहतर हो जाएगा। न्यूजीलैंड खेल रहा है भाई सेमीफाइनल इंडिया के अगेंस्ट, इट्स अनदर टाइम इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल, और इस बार पकड़ के धोबी पछाड़ देंगे। न्यूजीलैंड डिजर्व करती थी, बिल्कुल भाई डिजर्व करती है। तो क्लोज आकर के आ रहे हैं, 400 रन बना कुदरत का निजाम कितना ही करेंगे, वही रह गया, वो बहुत बुरा रह गया। लेकिन प्रीतीश, श्रीलंका ने जो खराब परफॉर्मेंस करी है उसके बारे में सुपर चैट आई है, उसके बारे में बात करेंगे। प्रीतीश बोल रहे हैं, एज अ क्रिकेट फैन आई फील बैड टू सी सच स्टेट ऑफ श्रीलंकन टीम आफ्टर वेस्ट इंडीज। नाउ वी आर सीइंग डाउनफॉल ऑफ श्रीलंका, नाउ देयर बोर्ड्स इज सेक्ड, व्हाट इज नाउ देयर बोर्ड इज सेक्ड, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका का फ्यूचर यार काफी ज्यादा खतरे में ही मुझे तो लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आप हारे थे 55 रन मात्र श्रीलंका की टीम, और दो बार बैक टू बैक ये हुआ कि इंडिया के सामने श्रीलंका की ये हालत हो गई। पहले श्रीलंका में एशिया कप में, फिर इंडिया में आपका वर्ल्ड कप में ये हालत हो जाती है। तो फिर तो बनता था, अब आप एग्जाम्पल मान के चलो, सोच के चलो, गॉड फॉरबिड कभी ऐसा ना हो इंडिया का किसी टीम के सामने ऐसा परफॉर्मेंस आए। तो आप भी देखेंगे ना, हम T20 वर्ल्ड कप में जो इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच के जबकि हारी थी, उसके बाद भी कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आए थे। आपका भी जो सिलेक्शन कमेटी थी उसको सैक कर दिया गया था, हालांकि बाद में मोस्टली उन्हीं लोगों को चूज कर लिया गया था। तो ये जरूरत थी, क्योंकि चीजें हो रही हैं, खराब जा रही है, आपको पता लगाने की तो जरूरत है ना। और जब आप स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हो, उसको लेकर के काम कुछ होता है, तो शायद आपके लिए बेटर रिजल्ट्स भी आते हैं। तो ये जरूरी है, अगर आप खराब जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, ये श्रीलंका को यकीन नहीं हो रहा देख करके कि ये श्रीलंका की ही टीम है जिस तरीके से ये खेल रहे हैं। तो श्रीलंका ने खराब किया, डिसअपॉइंट किया, टूर्नामेंट के लिए भी नुकसान हुआ है, जो फैंस इतनी दूर दूर से आए उनका भी नुकसान हुआ है, और काफी हद तक जो लोग बोल रहे थे एक तरफा टूर्नामेंट हो गया, इतना बुरी तरीके से एक तरफा छोटा वाला क्वेश्चन है आपके पास श्रीलंका। तो बनता है भाई, पता इनका डाउनफॉल वही शुरू हो गया था। डाउनफॉल तो है, आपने एशिया कप का फाइनल जिस दिन हुआ था ना, 50 रन पे ऑल आउट हुए थे, उस दिन से इनका डाउनफॉल शुरू हो चुका था। फिर आप वार्म अप गेम्स में आते हो, अफगानिस्तान से हार जाते हो। डाउनफॉल उस दिन से शुरू नहीं हुआ है, तब से शुरू हो गया था नितिन भाई, तब से शुरू हो गया था। इसके बाद श्रीलंका परफॉर्म नहीं कर रही थी यार। श्रीलंका पहले कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रही थी?
क्वालिफायर्स खेल के आ रहे एशिया हैं कप के फाइनल में तो पहुंचे थे यार, मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्वालिफायर्स खेल के आ रहे हैं ना वर्ल्ड कप में, क्वालिफायर्स खेले ना उन्होंने, डायरेक्ट तो क्वालिफाई नहीं किया, अफगानिस्तान ने क्वालिफाई किया है। श्रीलंका जब से संगकारा, दिलशान, जयवर्धने, मलिंगा, जब से ये लोग छोड़ के गए वो कभी उभर ही नहीं। हाँ चाहे आप 17 में देख लो, 16 में देख लो, वो लोग उभर ही नहीं पाए। 19 में आप देख लो, 19 वर्ल्ड कप भी ऐसे गया उन लोग का। तो क्या चल रहा है, मुथैया मुरलीधरन का एक इंटरव्यू में देख रहा था कुछ दिनों पहले, उन्होंने भी उनसे सवाल पूछा गया कि भाई श्रीलंकन टीम को हुआ क्या, तो उन्होंने भी बोला कि समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सारी फैसिलिटी श्रीलंका के पास है ना, पैसे श्रीलंकन प्लेयर्स को ज्यादा मिलते हैं, वो अपने से कंपेयर करके बता रहे थे मुरलीधरन। तो सारी चीजें उनके पास है, फिर भी क्या हुआ है पता नहीं लगा, पता चल ही नहीं रहा है अभी। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो श्रीलंका का डाउनफॉल क्रिकेट का वो अभी एशिया कप में नहीं हुआ, वो बहुत टाइम से चलते हुए आ रहा है। 4-5 साल हो चुके हैं श्रीलंका को उसी स्टेट में, और उससे ऊपर शनाका ही थे। देखो एशिया कप ये लोग जब पिछले टाइम जीते थे, शनाका ही कैप्टनसी में जीते। वही मैं कह रहा हूं, एशिया में आया था ना, एशिया में थोड़ा बहुत कर लेते हैं जैसे तैसे फाइट मार के, बट ग्लोबल लेवल पर अगर हम देखें, जब वर्ल्ड कप में बात होती है या बड़े गेम्स में, T20 वर्ल्ड कप आप देख लो, श्रीलंका कहीं पर नहीं है। तो वो डाउनफॉल तो भाई हमेशा से तो नहीं, लेकिन 4-5 सालों से अब से इनके वो जो एक लॉट सीनियर प्लेयर्स का जब छोड़ के गया, उसके बाद से ये लोग उभर ही नहीं पाए। बीच में वो उम्मीद की किरण जब एशिया कप जीते थे तब वो शायद थोड़ी सी उम्मीद की किरण ठीक है, वो बीच में उम्मीद की उसके बाद किरण थी, इतना खास परफॉर्म किया नहीं, जैसा कि आपने बोला क्वालिफाई देखो पाकिस्तान ने भी T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, पिछले एशिया कप की बात लेकिन T20 फॉर्मेट में था। ठीक है, T20 में तुक्का सबके लग जाते हैं। ODIs अभी एशिया कप फाइनल में क्या हुआ देखा ना आपने, 50 पे खत्म यार। वर्ल्ड कप आप देख लो तो उनका डाउनफॉल तो शुरू पहले से ही है, अफगानिस्तान बट भाई में अभी तो यहाँ पे बोरिंग कर दिया है श्रीलंका ने बहुत ज्यादा। 88 for 5 है, और लास्ट बैटिंग पेयर है मैथ्यूज और डिसिल्वा, और यहाँ से इट्स ऑलमोस्ट कंफर्म कह सकते हैं हम कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल होने वाला है मुंबई में आपका 15 तारीख को, मोस्ट प्रोबेबली, और इंडिया वहां से उस दिन फाइनल में पहुंच जाएगा। 19 तारीख को खेलेगा। क्योंकि ये Finger crossed. न्यूजीलैंड की टीम क्लोज Knock on wood. आई है, बट हारी है न्यूजीलैंड की टीम। तो न्यूजीलैंड की टीम मुझे लगता है कि इस बार शायद, अगर अभी की इस पर हम जाए परफॉर्मेंसेस बोले, ये तो श्रीलंका की टीम है जो कि हार ही रही है, बैक टू बैक हार रही है। तो इंडिया के लिए शायद उतना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन जितना न्यूजीलैंड पिछले मैच में थी, इस बार शायद आएगी, तो शायद उतना ज्यादा उस बार से देखो उस टाइम की कंडीशन थोड़ी सी अलग थी। 19 में आप ओवरकास्ट कंडीशन में खेले, ये इस बार वाली कह रहे कि इंडिया न्यूजीलैंड जो मैच हुआ था, जो इसी टूर्नामेंट में मैच हुआ था न्यूजीलैंड का, उससे नहीं, इस बार देखो कोई भी हो यार, आप मारोगे ही मारोगे। हम जैसे कि आप सामने वाले को मत देखो, आप जैसे खेल रहे हो, क्योंकि आप हर चीज के लिए तैयार हो, आपकी कैलकुलेशन परफेक्ट जा रही है, आपका एक गेम प्लान है, आपकी जिम्मेदारियां जिनको दी गई है वो अपनी जिम्मेदारियों को उस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो। तो आपकी सारी टीम आप देख लो, टीम परफॉर्मेंस एज अ यूनिट टीम परफॉर्म कर रही है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी है लोगों की, इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी देखी है हमने इस टूर्नामेंट में लोगों से। तो जिस तरीके से हम खेल रहे हैं हर सिचुएशन में, आप देख लो ना, जब हम 0 for 2, 2 for 3 हो जाते हैं, वहां से गेम जीत जाते हैं। उसके बाद जब हमारा टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है अगेंस्ट इंग्लैंड, रोहित शर्मा ऐसी नॉक खेल जाते हैं जो आर्ग्यूबली अभी तक की बेस्ट नॉक है वर्ल्ड कप की उस कंडीशंस में, है ना। तो आपकी टीम के पास सारे प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो कहीं से भी मैच निकाल सकते हैं, मैच विनर्स, है ना। जो लोग बात कर रहे हैं ना कि क्या अब ये वो वाली टीम है जो 2003 या 2000 के एरा की ऑस्ट्रेलियन टीम थी, तो मुझे लगता है कि उस टीम में जितने सारे मैच विनर्स थे, इस टीम में भी वैसे ही मैच विनर्स। यार सबसे बड़ी बात ये है ना कि जो जैसे 3 टीम्स तो आपके पोजीशन लॉक हो चुकी है, पर लेकिन चौथी टीम कौन सी होगी? मोस्ट प्रोबेबली न्यूजीलैंड। अगर आप चारों टीमों में देखें, पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की जो कमी सामने आई थी कि स्टीव स्मिथ का बल्ला, मार्नस लबुशेन का बल्ला नहीं चल रहा है, एक कमी वीकनेस निकलती है। स्पिनर्स उनके पास एडम जैम्पा के अलावा ऑप्शन नहीं है ज्यादा अच्छा, वहां पे आपको मैक्सवेल से बॉलिंग करानी पड़ती है, एक वीकनेस। ठीक है, ये वीकनेस इनके पास है। बाकी चारों इसको जरा ऑन कर दीजिए। कहाँ पे कहाँ पे रखा है? पीछे रखा है भाई, पीछे पीछे रखा पीछे है। पीछे 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 देख लें आप जरा। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की मैंने आपको कमी बता दी, साउथ अफ्रीका चेस कर रही है जब भी, तब भी वो भाई कुरैशी जी अगर जुड़ने को तैयार हो तो उन्हें जोड़ लीजिए, लिंक भेज दीजिए। मैसेज आया उनका। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका की कमी आपने निकाल ली,
ठीक है, न्यूजीलैंड की कमी आपको पिछले 4 मैचेस में देखने को मिली है। न्यूजीलैंड जिस हिसाब से खेली है, इनकी बॉलिंग मैट हेनरी के बिना थोड़ा सा वीक लगा है, और सबसे बड़ी बात ये भी थोड़ा ना डिफेंड करते वक्त थोड़ा प्रॉब्लम में भाई हमने जिस न्यूजीलैंड को हराया था ना, वो 4 मैचेस 5 मैचेस वही तो मैं कह रहा हूँ। और अब बात हमें कमी की उस टाइम पे भी जरूरत नहीं थी और अभी भी जरूरत अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया हर सिचुएशन में टेस्ट हो चुकी है भाई। इंजरी कंसर्न न्यूजीलैंड पे भी आया था, इंडिया पे भी आया, लेकिन इंडिया वहां से लगा भी नहीं कि हार्दिक पांड्या टीम में नहीं और हम निकल गए, हमने बैलेंस कर दिया। न्यूजीलैंड को मैट हेनरी की कमी महसूस हो रही है, आपको वो रिकवरी उनके यहाँ पे उनकी जगह कोई आपको ऐसा गेंदबाज नहीं मिल रहा है जो आपको मिडिल फेज में विकेट ले दे। हालांकि आज अच्छी परफॉर्मेंस है, बट पिछले 4 मैचेस में वो कमी दिखी है साफ साफ। और न्यूजीलैंड की बैटिंग तो हमेशा क्लिक कर रही है, लेकिन बॉलिंग पिछले 4 मैचेस में ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रही है, तो न्यूजीलैंड की कमी है। लेकिन इंडियन टीम के अंदर आप मुझे एक कमी बता दो, हमने डिफेंड करके दिखा दिया, हमने चेस में तो मास्टर है, ये आपको दिख चुका है। हमारी बैटिंग अगर हम मुश्किल सिचुएशन में होते, जैसा कि नितिन भाई ने बताया, हमेशा निकाल देते हैं। बॉलिंग की बात करें, बैटिंग से अच्छा हमारी बॉलिंग परफॉर्म कर रही है। तो ओवरऑल अगर आप इंडियन टीम में एक वीकनेस ढूंढने जाओगे, कमी ढूंढने जाओगे, तो दिख ही नहीं रही है यार, दिख ही नहीं रही है। आप एक पॉइंट निकाल के दे दीजिए कि यहाँ पे हम कमजोर हैं, बहुत मुश्किल है, आप कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। गिवन डे बस आपके लिए कुछ ऐसा ना हो कि हमारा दिन खराब चला जाए, या आज हमारी बैटिंग नहीं चली, हमारा आज बॉलिंग फ्लॉप हो गई, तो ये चीज आपके लिए फिर उस एक दिन पर नहीं चाहिए होती, क्योंकि हमारा जो रीसेंट हिस्ट्री है वो कुछ इसी तरीके की रही है। हम अनबीटन रहते हैं। 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था, हम सारे मैचेस जीते थे, लीग मैचेस करीब 7 मैचेस थे, इंडिया ने लाइन से बैक टू बैक सारे मैचेस जीते। फिर आपका जब नॉकआउट मैच आया उसमें इंडिया हार करके बाहर हो जाते। 19 में भी हमने ऐसी चीज देखी, तो वो चीज अब हमें नहीं चाहिए। रिपीट हो रही है बार बार चीजें, T20 वर्ल्ड कप देख लो आप, ओडीआई देख लो, तो अब वो जो हो गया ना, तब करीबन 12 साल हो गए हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप हमें जीते हुए, तो वो सब चीज़ अब रिपीट ना हो होपफुली। जो हम बोल रहे हैं कि सारे मैचेस जीत करके जीतेंगे, क्योंकि अब नेदरलैंड से मैच है, नेदरलैंड से तो आप वैसे भी एक्सपेक्टेड है, ऑब्वियस है कि आप जीतोगे ही जीतोगे, तो आप पूरे 9 के 9 मैच जीत करके आगे जा रहे होगे, तो बस फिर कोई खराब दिन नहीं आना चाहिए। अच्छा, एक प्रेडिक्शन क्या है, कोई हमारे सुपर चैट भेजी थी किसी ने कि एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बताया था चांसेस इंडिया अगर 15 को सेमीफाइनल खेलेगा तो है कि इंडिया जीत जाएगा, बट 16 को इंडिया सेमीफाइनल खेलता है तो इंडिया का जीतने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पे पाकिस्तान आता है तो फिर आपका 16 को हो जाएगा, क्योंकि कोलकाता में होना है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ वानखेड़े में नहीं होगा। तो मैं तो यही चाहूंगी इसीलिए भी कि हमें कोई रिस्क नहीं लेना। हम पाकिस्तान से बेहतर किया है, उनको हरा के दिखाया है, अभी तो हमने बैक टू बैक कितना हराया उनको, तो हमें कुछ प्रूव नहीं करना, ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। तो हमको चाहिए कि बस अब वर्ल्ड कप चाहिए, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी चाहिए, किसी भी तरीके से कोई भी टीम सामने आ जाए यार, चाहे अफगानिस्तान, चाहे न्यूजीलैंड, चाहे पाकिस्तान, सबसे ज्यादा चांसेस न्यूजीलैंड के लग रहे हैं। और 2019 का बदला लोग कह रहे थे कि इंडिया न्यूजीलैंड का पूरा हो चुका था ना, अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं तो कहूंगा कि सेमीफाइनल हरा के इनसे बदला लो, ठीक है, सेमीफाइनल में हराओ, तब होगा बदला पूरा। जो 2019 में आप हारे थे, उसके बाद इतने दिल टूटे थे। अब मैंने एक रील देख रहा था, कोबरा भाई और चारू, कल ना एक रील थी, मैं उसमें बड़ा वो इमोशनल सी रील थी, मेरे लिए तो इमोशनल सी थी कि ये नीली जर्सी वाले अगला 1 महीना मेरा डिसाइड कर देंगे कि या तो मैं क्रिकेट को बहुत ज्यादा दिल से प्यार करने लग जाऊंगा, या तो मेरा दिल बिल्कुल टूट जाएगा। तो वही चीज है कि हर फैन के लिए है, क्योंकि जिस हिसाब से खेल रहे हैं, जो माहौल दिख रहा है ना टीम का, यहाँ से लग ही नहीं रहा कि आप वर्ल्ड कप हारोगे। और यहाँ से अगर वर्ल्ड कप हार गई, शायद मैं विश्वास भी नहीं कर पाऊंगा कि इंडिया वर्ल्ड कप हार गया यार। पता है प्रॉब्लम प्रियांशु ये, जो लोग बोलते हैं ना कि अब हमें उम्मीद नहीं है, हम नहीं बात करें, इंडिया नहीं, वो कुछ ना कहीं लोगों के दिल में वो चीज है बैठी हुई, क्योंकि हमने हर बार यही सोचा था, हमने 15 में भी ये सोचा था, हमने 19 में भी यही सोचा था कि हम तो जीत ही जाएंगे, हम तो जीत ही जाएंगे। फिर जिस तरीके से चीजें हो जाती है ना, तो फिर लोगों का ऑलरेडी दिल उसको लेकर के टूटा हुआ है, इसीलिए एक्सपेक्टेशंस शायद उतनी ज्यादा कुछ लोगों ने लगाए, जैसे लक्षित को भी आप देख लो, वो भी यही चीज बोलते हैं। तो मैं चाहती हूँ जो लोग सोच रहे हैं कि यार एक्सपेक्टेशन पहले बढ़ा देते हैं फिर एकदम से दिल तोड़ देते हैं, वो चीज ना हो, लोगों का जो भरोसा चला गया था वो रिस्टोर हो जाए वापस से। क्या ये एज लगा था, ये कैच छूटी है, टर्न था? टर्न तो था खैर, लेकिन एज लगा ही नहीं लगा, वो कैच ड्रॉप नहीं हुई क्या? लग तो रहा है मेरे को सेंटनर चांस था ये, लेट्स सी, चांस था ये, लगा चांस था, बल्ला लगा बैट छूट गया, बैट लगा, बल्ला लगा था बॉस, पर मुश्किल था, ट्राई ना। काफी ज्यादा मुश्किल था ये। ठीक है यार, कुछ रन तो बना लो, कुछ तो खेलो। डिसिल्वा है अभी तो, खैर डिसिल्वा भी है, मैथ्यूज भी है, बस ये दो ही। अब ये थोड़ा सेंसिबली खेल रहे हैं, टाइम ले रहे हैं अपना आराम से। अब आपने अब आप ऐसे खेलो ना, मुश्किल आ चुका, अब तो खत्म हो गया ना आपके लिए मामला यार। अब आपको ऐसे खेलना चाहिए था, मतलब शुरू से ही ऐसे खेलना चाहिए था आपको।
2 विकेट आने के बाद तो संभल ही जाना चाहिए। निसंगा का काम था वहां पे शुरुआत में कि स्ट्राइक रोटेट करते रहे। परेरा अपना सोच के आए थे कि भैया मैंने हार्ड हिटिंग करनी है। निसंका तो चल भाई अच्छी बॉल पे आउट हुआ। हाँ। मेंडिस की क्या शॉट थी? कोई शॉट बनती थी मेंडिस की? हवा में वो पीछे मार के आउट हो गया। मेंडिस की क्या शॉट थी? समारा विक्रमा चलो अच्छी शॉट, अच्छी बॉल पे आउट हुआ। परेरा की क्या शॉट थी? बनती थी परेरा की शॉट। अबे आप सेट खेल रहे हो, आप अच्छा खेल रहे हो, वहां पर ऐसी शॉट खेल के आप अपनी विकेट थ्रो कर, ये तो विकेट थ्रो करने वाली बात हो गई ना। अभी श्रीलंका 94.5 है, क्यों है? परेरा की वजह से। परेरा जो नॉक खेल के, तो वो नॉक को उसको बड़ा करना चाहिए था। इमेच्योरिटी दिखाई आपने एक मैच्योर प्लेयर होके। तो आप गेम सेंस कहाँ गई यहाँ पे? मेंडिस की शॉट नहीं बनती थी, परेरा की शॉट नहीं बनती थी, और उसके बाद आप देख लो लास्ट कौन आउट होके गया है, असलम का, उसकी शॉट नहीं बनती थी। पता नहीं कैसे खेलोगे। अब ये लोग भी तो आराम से खेल पा रहे हैं ना भाई, ये लोग भी तो स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं ना, आप लोग को करना चाहिए। मैथ्यूज भी दिखा रहे हैं ना एक्सपीरियंस, उसको भी एक्सपीरियंस है, वो रुक के खेल रहा है, उसको पता है कि विकेट गिरी है तो शायद मुझे थोड़ी देर क्रीज पे रहना पड़ेगा, मतलब डीप लेके जाना पड़ेगा यहाँ से यार। अगर आपको फाइटिंग टोटल का भी सोचना है, फाइटिंग टोटल भी मैं नहीं कहूंगा कि इस पिच पे 250 है, 250 यहाँ पे फाइटिंग टोटल नहीं है, आपको एटलीस्ट लगाना पड़ेगा 290, एटलीस्ट बोल रहा हूँ मिनिमम आप 300 280 290 मिनिमम। भाई यहाँ से जितने भी ये लोग बना ले वो फाइटिंग ही है इन लोग के लिए। और कोई हैरानी नहीं होगी 150 के नीचे निपट जाए, कोई हैरानी नहीं होगी कि 150 के नीचे निपट जाए, क्योंकि 150 में भी 55 या 50 रन ही रह गए नहीं। हाँ, और 50 रन पे तो ऑल आउट होने की खासियत है। 50 रन के रवायत अंदर रही है श्रीलंका की, बट सामने इंडिया भी तो नहीं है ना। और बॉलिंग अच्छी करी इन्होंने भी आज, बॉलिंग नहीं अच्छी की है, न्यूजीलैंड के लिए भी डू और डाई है यार, आपको करना ही पड़ेगा, आपको जाना है तो आप ये नहीं कि भाई वहां पे ऐसा हो जाए, वहां पे कुदरत का निजाम हो गया, निजाम पे नहीं डिपेंड हो रहे हैं, हम खुद करके जीत करके जाएंगे, इसलिए ये नहीं छोड़ेंगे कोई भी मौका। एक बारी आजा दूर जाने वाले। तो पाकिस्तान का तो हो गया भाई, फिर अब ऑलमोस्ट पैकअप खत्म, टाटा, दिल टूट गए, बाय बाय, गया, खत्म हो गया यार। हर बार नहीं होता ना यार, साउथ अफ्रीका से भी हार गए थे, हर बार ऐसे फखर जमान को हर बार शुरुआत में ना कैसे हो खिलाना, जाएगा ना? फखर जमान को शुरुआत में ना खिलाना, उसामा अमीर को बाहर रखना, शदाब खान को खिलाना, आपको कर गया कॉस्ट बहुत ज्यादा। और मोहम्मद वसीम जूनियर ने भी आपके लिए आते ही इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, शायद शुरुआत में खिला लेते, मे भी रिजल्ट्स आपके लिए थोड़ा बहुत फेवर में रह सकते थे। चेंजेस जो आपने करे बहुत लेट करे, तो वही बात है कि वैसे तो कहावत होती है देर आए दुरुस्त आए, देर आए पर दुरुस्त नहीं आए, नहीं तंदुरुस्त है, बस पस्त आए। बस तो ये हो गए, फिर भी आपको लिए यहाँ तक पहुँचा दिया, यहाँ तक अभी भी आप जिंदा हो, गिन रहे हो खुद की सांसें कि हाँ हम हैं नहीं है, तो भी एक ही बंदे की बदौलत आप देख रहे हो। कोबरा जी छोले भटूरे हो जाए, छोले भटूरे खिलवाइए आप, मन सा कर रहा है छोले भटूरे खाने का, खिलवाएं खिलवाएं। बहुत मन करते हैं तुम लोगों के, ये खा लें वो खा लें। कल मैंने खाए बड़े अच्छे छोले भटूरे, मजा आ गया था। अच्छी बात है भाई, क्रिक रॉकेट को डाउनलोड कर लीजिए आप सभी जितने भी लोग देख रहे हो, नहीं किया तो कर लो, गूगल प्ले स्टोर से हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, तो उसको डाउनलोड कर लो। निवेद फूड्स का भी नंबर है आपके सामने, इनको भी कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। फूड सारी 20 का कूपन कोड लगाइए, 20% पहले ऑर्डर पे डिस्काउंट भी मिलेगा। और देखते हैं स्पोर्ट्स आदि को भी सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, लाइक करो लाइव को यार, बड़ी कंजूसी करते हो आप। हो ओ कह रहे हैं वन वीकनेस ऑफ इंडिया इज विराट कोहली स्टैट पैडलिंग। अच्छा, विराट कोहली स्टैट, भाई उसने आपको बहुत मैचेस जिता दिए हैं। पाक विल क्वालिफाई फॉर कराची एयरपोर्ट, आवर अर्थ इज बेस्ट बोल रहे हैं। पाक हैज बीन क्वालिफाइड, हो चुकी है वो। एक कमेंट में आउट क्यों लिख रहे हैं भाई? क्या आप फिर आउट हो गएगा भाई? क्या आप हमारे साथ फिर से फिरकी ले रहे हो? नहीं यार, सब लिख रहे हैं। आपकी तो फिरकी लेनी बनती भी, सब लिख रहे हैं यार, गया नहीं, आज मेरी प्रेडिक्शन सही गई है, आज आप अप्रिशिएट नहीं करोगे मेरे को। इस्लामिक तो मैंने कहा था कि विकेटें जाएंगी, वर्ल्ड कप खत्म होने को आ गया तब जाके आपकी एक प्रेडिक्शन ठीक हुई है। तो मैं भी इस्लामिक स्टोरी बोल रहे हैं, या अल्लाह इन लोगों को दिखा दे कुदरत। Now also available in mini. This is my Majnun. बढ़िया डिफेंस।
क्या बोरिंग कर दिया यार, क्या बोरिंग कर दिया गेम एक दो ओवर बाद फिर इजाजत ले लेंगे। कुशल परेरा की बैटिंग में एटलीस्ट मजा तो आ रहा था। 2 ओवर के बाद इजाजत ले लेंगे। आई मीन इस ओवर के बाद अगला ओवर देख के काफी भूख भी लग रही है। तो कर दिया परफॉर्म, देखिए कोबरा ने परफॉर्म कर दिया। जगराते में आपका स्वागत है। बाबा था अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद। क्रिक रॉकेट को डाउनलोड कर ले दोस्तों। ऐसा बजाओगे कोई याद नहीं फास्टेस्ट क्रिकेट अपडेट मिलेंगी आपको। क्रिक रॉकेट को आप डाउनलोड करें। निवेद फूड के साथ आप जो है वो हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स भी मंगा सकते हैं। दिखा दो भाई निवेद वाला भी, नंबर भी है ऑफिशियल दे रखा है, तो आप जाइए ऑर्डर कर लीजिए। और स्टेक के साथ आप उनकी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। टीम इंडिया के सुपर फैन बन सकते हैं। दिखा तो भाई, मैंने सबके बता दिए, तुम क्रिक रॉकेट के लगाए पड़े हो बस। ओ कह रहे कोबरा को डोसा खिला दो। यार मैं लाइट खाने का बोल रहा हूँ। इतना भी लाइट नहीं यार, कोबरा बिल्कुल ही डोसा पे आ गए आप तो, छोले भटूरे से। मेरी तबीयत नासाज है ना। कहा आप नॉर्थ से साउथ पे आ गए, डोसा। नॉर्थ से साउथ पे आ गए, कुछ दाल रोटी खाने हम जो दिल्ली के लोग हैं ना, हमें खाने पसंद है बटर नान, दाल मखनी, शाही पनीर, छोले भटूरे। ये सब मुझे खाना पसंद है, लेकिन अभी तबीयत खराब है। वैसे दाल मखनी ऑलवेज माय फेवरेट विद बटर नान, गार्लिक नान दोनों ही। सम टाइम मिस्सी रोटी आल्सो। बटर गार्लिक जब बटर नान और अवेलेबल नहीं होते तब मिस्सी रोटी। अच्छा क्या लग रहा है श्रीलंका कहाँ तक पहुंची? 150 170 नितिन 200 बना लेंगे है ना, यहाँ मुझे से भी लग रहा है 200 तक पहुंच जाएंगे। ये देखिए जैसे तैसे पहुंच जाना चाहिए 200। मजा तो आया यार, लोग आए हैं देखने के लिए काफी। इनका चेहरा केन विलियमसन से मिल रहा है थोड़ा 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 थोड़ा। इनकी जो बियर्ड है वैसी बियर्ड बड़ी अच्छी केन विलियमसन की वैसे। केन विलियमसन काम एंड कंपोज्ड गेम। शॉट वाओ अच्छा शॉट था यार डिसिल्वा, क्या बात है। यार धनंजय डिसिल्वा अपने ऊपर वाले बैटर्स को भी जरा बल्लेबाजी सिखा देते कि कैसे खेलना 100 है। रन कंप्लीट हो गए भाई श्रीलंका के। 102 फाइनली चलो यार बचा ली। 100%। और अब देखो जिस तरीके से ये लोग खेल रहे हैं ना, कि अगर आप टाइम ले लोगे, थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेट कर लोगे, तो इस पिच पर हमेशा से रन बनते हैं। ये जो 5 विकेट आपने खो दी ना, वो आपको बहुत कॉस्ट करेगा श्रीलंका को, क्योंकि परेरा जिस फॉर्म में था या बाकी के लोग थोड़ा सा टाइम लेते या थोड़ा सा सेंसिबल क्रिकेट खेलते तो बड़ा स्कोर इस पर बनते। चाहे 400 बना दिए थे न्यूजीलैंड ने लास्ट गेम में, और उसको चेज करते करते पाकिस्तान ऑलमोस्ट जीत गया था। पूरा गेम नहीं हुआ था। वाले मैदान में बनाए थे। आपने भी तो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वैसी क्रिकेट खेली थी ना, तो पता नहीं कैसी क्रिकेट खेल रहे हो आप। थोड़ा सा परखच्चे उड़े हुए हैं इन लोगों के दिमाग के भी। बट 100 रन कंप्लीट हो गए यहाँ पर श्रीलंका के, और चल तो बोरिंग ही रहा है भाई। पर सबसे बड़ी बात, अगर आज श्रीलंका हार जाता है तो हम चैंपियंस ट्रॉफी की भी बात कर लेते हैं यार। टॉप 8 टीम्स वहां पे नहीं आ पाएगा श्रीलंका, बहुत मुश्किल है इनके लिए फिर क्वालिफाई करना। ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, नहीं आ पाएगा तो। सारी चीजें तो देखो, खेलो इंग्लैंड तो क्वालिफाई कर गया ना भाई। इंग्लैंड तो कर गया, इंग्लैंड पाकिस्तान को भी हरा दे तो इजीली कर गया पाकिस्तान। ये श्रीलंका का आज लास्ट गेम है क्या? हाँ लास्ट गेम है, लास्ट गेम है। वही तो कह रहा हूँ कि कहानी खत्म, चैंपियंस ट्रॉफी की उम्मीद है। अब कल वाला गेम कल 10 तारीख है ना, कल अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका। हाँ कल भी मजेदार गेम साउथ है अफ्रीका यार। आज की 11 को पाकिस्तान, इंग्लैंड 12 को इंडिया, और पाकिस्तान इंग्लैंड दिन में भी है एक डेड रबर मैच। मजेदार तो ठीक है, बट आज वाले गेम से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा ना यार। अगर आप श्रीलंका नहीं जीतता, कल वाले मैच में भी बहुत दमखम नहीं है यार, सच में बताऊं। परसों वाला वो ना, झूठ नहीं है। नहीं कल वाले के क्यों, अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका दम है भाई। अगर बड़े अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका को फाइनल लगा चांसेस सकती है बहुत रिड्यूस हो जाएंगे, बट लेकिन हाँ फिर वापस वे गेम आ जाएगी ना। आज न्यूजीलैंड हार गया या कुछ हो गया, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, चांस तो अफगानिस्तान के चांसेस है। मैं वही कह रहा हूँ, वरना आज न्यूजीलैंड जीत गया तो खत्म है भाई। क्या पाकिस्तान क्या अफगानिस्तान खत्म? वही मैं कह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड की जीत पर डिपेंड करता है। ओवर हो जाएगा इन लोगों के लिए, क्या कहते हैं, टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा, टाटा खत्म, टाटा बाय बाय गया। काफी हद तक तो देखो क्लियर हो ही चुका है अभी तक कि श्रीलंका की परफॉर्मेंस। बट ये पार्टनरशिप कम से कम 40 ओवर तक खेलना पड़ेगा भाई, खेलना पड़ेगा। बट न्यूजीलैंड यहाँ से आपको लग रहा है कि जीत जाएगी ये बोलते क्या जुबान में पता नहीं, जैसे ही बोला इन्होंने कि इन्हें 40 ओवर तक खेलना पड़ेगा, पार्टनरशिप होनी चाहिए। 104 पे 6ठा विकेट गिर गया है, खत्म है भाई। आपका एक्सपीरियंस बैटर एक बार फिर सेट होके, शायद लग रहा था, एक उम्मीद की किरण थी कि पार्टनरशिप हो रही है, रुक के खेल रहे हैं, छक्का भी आया था गेम तो बहुत जल्दी खत्म हो उसके जाएगा। बाद
आपने विकेट गवा दी। वैसे तो हम देख रहे थे इस वर्ल्ड कप में 7:30 बजे 8 बजे मैचेस खत्म हो रहे थे, लेकिन कोबरा मुझे लग रहा है कि ये 6 बजे तक गेम खत्म हो जाएगा। आज हमारे स्पेशल टाइम पे मिड इनिंग के टाइम पे आप हम एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि कोबरा कहते हैं एंजॉय लाइफ। आज एंजॉय लाइफ कर सकते हैं। एंजॉय लाइफ होनी चाहिए भाई। करने के आए हो फिर इस गोले पे, लाइफ एंजॉय करने नहीं, एंजॉय लाइफ करना है। छठा विकेट फिर मेरे ख्याल से ज्यादा खेलते हैं यार, क्योंकि ये कभी भी टपक पड़ से फिर फर्स्ट इनिंग ब्रेक के लिए, इनिंग्स ब्रेक के लिए आना पड़ेगा, तब तक खाने पीने का इंतजाम भी करना। बिल्कुल सही बात। तो दोस्तों अभी फिलहाल इजाजत दीजिएगा हम लोगों को। क्रिक रॉकेट को भी आप डाउनलोड कर लें, निवेद फूड के साथ टेस्टी और हेल्दी स्नैक्स मंगा लें। स्टेक की वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का, तो दोनों ही चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिए। गिव अवेज कब होने कुछ पता है आपको? दिवाली पे कह रहे हैं, दिवाली पे जो है वो लक्षित से बात हुई थी उन्होंने, गिव अवेज कल कुरैशी, वैसे मेरी भी बात हुई थी इस बारे में, तो ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को, और बाकी के तमाम इंस्टाग्राम फॉलो करें, और हमें भी इंस्टाग्राम फॉलो करें, ट्विटर फॉलो करें, इमाम को, चारू को, मुझे, हर किसी को फॉलो करें। अभी फिलहाल इजाजत दे दीजिए, जैसे ही मिड इनिंग्स होती है, जैसे ही ऑल आउट होते हैं, तुरंत हाजिर हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। माउंटेन ड्यू, यार हैं तो पार हैं। Welcome back, and another warm welcome to Emirates Old Trafford here. It's a beautiful day in Manchester. As they always say, the sun shines on the righteous. I think that's the saying that we should be getting on with. We've already seen one victory here earlier on today, a terrific victory for the Thunder, their first game, their first win of the season. Can we make it 2 out of 2? Well, tonight it is, of course, the turn of the Lightning up against the Nottinghamshire Outlaws. I'm delighted to say that David Lloyd is with me this evening. David, good to see you. How are you? I'm okay. I'm absolutely thrilled to come to Emirates Old Trafford. This is one of the great stadiums of the world. Make no mistake, the sun's shining. It's going to be rocking. It always is for T20. You have brought the sunshine with you, which is nice. Well, I've come a long way. I live in deepest, darkest North Yorkshire now, so I've brought the sunshine. So you've crossed over to the old enemy, so to speak. Sort of, and I go under cover of darkness. I don't blame you. Do you take your passport as well? Yeah, I got to do all that. You've had all your stuff, rabies shots, all that kind of thing. I know all the phrases. How much? Yeah, that's true. Yeah. Happen, etc. We'll be playing the Yorkies before too long, of course. Can't wait for that one. As far as this game is concerned tonight, it's been a terrific start for the Lightning. 2 wins from 2 games. They've absolutely ripped into it so far. Do you know, I think that is so important. When you get into the T20 Blast, you need a good start. You need to hit the pitch running, and they've done that. They've played 2 matches, impressive against Leicestershire, just blowing them away. And so you've got to keep that momentum going. You're at home. They've not been defeated here for 16 matches. This is a real fortress, but they're up against a top outfit. But no mistake, these Outlaws, they played last night, beat Derbyshire, they play again against Durham on Monday, and they're going to be roundabout. The man that everybody talks about, of course, is Shaheen Shah Afridi. Yeah. I mean, what an international player he is. Absolutely terrific bowler. How difficult is it going to be up against a bowler like that when you've got someone like that in your attack? Well, the Lightning will have a plan. He can only bowl 24 deliveries. And so do you go after him, go strong against him, or just say, well, in 4 overs, if he goes for 25, we've done okay. It's going to be a fabulous pitch here. But also, you look at their batters, Alex Hales. As soon as I look on it, is Hales playing? That's the first thing I said, because he can demolish you. If I've been out in Dubai, and he flew into opposition, and then right at the end he tailed off and couldn't get a run. I hope he's brought that with him. Well, he had a bit of a failure last night, I think, by his standards. He got 12 last night. The Outlaws got a 4-wicket win over Derbyshire Falcons, but Joe Clark hit 68 and Matt Montgomery got 51. So they've still got plenty of power down that order, haven't they? Yeah, I looked at the lineup and I think they're strong in batting, and of course, with Afridi in the team, you know, he's going to spearhead the attack. It's just this pitch, I don't think he's going to help the bowlers too much, so they've got to use the brain. The batters should be saying, I'm going to clatter it all over the place here.
They're going to give us a pitch report a little bit later on. I'm just having a look behind my shoulder to see what's going on because the two captains are there at the moment. So let's have a look and see if we can walk over and see what's happening with the toss itself. We'll get back to Bumble himself. He'll give us a pitch report in a little while. My old mate Stephen Mullaney is there, Nottinghamshire captain these days, of course, and Liam Livingston is there as well, as we make sure what we can hear from the two umpires and the two captains as they decide who bats and who bowls first. Just a few last little instructions as they have a look at the boundaries and what have you, and we'll hear from Liam Livingston as soon as the toss is done. A little bit of a breeze has just blown up here a little bit here now, which has blown the coin out of Liam Livingston's hand, but here we go with the toss itself, and he's thrown that one a long way, to be fair. The umpire rather is going to have a good long look at this one. So decision's been made and the boys have shaken hands. We'll have a quick photograph with the two of them in just a sec. Mole just getting in the wrong direction there. We're going to be in the way here. We best get out of it. Let's just have a little bit of a move round, see if Livy can join us. Good to see you, Mole. Thanks very much, mate. We'll get Liam on here. Liam, thanks very much indeed for joining us. The toss has been made. What's the verdict? Yeah, we've won it. We're going to have a bat. We always like to have a bat first here, don't you, if you get the opportunity. Just in terms of the side itself, any changes from that blistering show we saw on Thursday? No changes. Same team. Yeah, like you said, it's something we always do well here is bat first, get a score and hopefully defend it. It was an absolute steamrollering of Leicestershire the other night, wasn't it? Just how much does that give everybody a great deal of confidence going into the rest of this competition now? Yeah, it does. I think that's the sort of thing we pride ourselves on, is when you get the chance to really bury a team. So, no, the boys did really well. I thought the bowlers were unbelievable and we finished it off really well with the bat. So we know every game's not going to be like that, so I think today will be a bit more difficult, and no, the boys are really looking forward to it. Yeah, they are a quality side, the Outlaws, aren't they? Just how much of a threat are they going to be tonight, do you think? Yeah, they've got a lot of world-class players in their team, so but so have we. So everybody's looking forward to it. It's a great occasion. It's nice to be back at Old Trafford. So yeah, everybody's excited. And how much are you looking forward to hopefully putting on a real big show in front of a big crowd here under the lights at Emirates Old Trafford? Yeah, that's something we pride ourselves on, making sure that we entertain the crowd that comes in and hopefully make them want to come back and watch us play cricket. So yeah, like you said, hopefully we can put on a show and ultimately take away the 2 points. We wish you the best of luck, Liam. Go well. Thanks very much indeed for joining him as Liam Livingston there. So Lancashire are going to be having a bat, and it will be interesting to see just how some of the players get on this evening, including the likes of Tom Hartley, who I had a little chat with earlier on during the ladies' game. sẽ mang chiến công trong môn kỳ này. Bóng đã lăn, chàng Sơn quyết tâm dẫn trước rồi này. Thấy sắp thua, chàng tuy có hơi hoang mang lo sợ nằm ngửa có nghi lô. Bước xa như một vị cứu tinh. Thật tuyệt quá, hương vị sữa quá thơm ngon và cùng nhiều khoáng chất cho chúng ta khỏe hơn. Nhập cuộc thôi, lo gì đã có mì lô, luôn tiếp thêm nhiều năng lượng ta chinh phục cuộc chơi. Chẳng hề khó, cái gì khó có mì lô, luôn ở bên ta mỗi ngày, luôn đồng viên ta mỗi giây. Mọi thử thách chinh phục ngay trong xò bi, sao chỉ về thất bại ta có chí thì nên. Hey yeah, 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 việc của mì lô ngoan tuyệt luôn các bạn ơi. Chẳng hề khó, cái gì khó có mì lô, ta quyết tâm phải chinh phục hết mọi cuộc chơi. Hey yeah, 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 ta hãy luôn thật vững vàng từng cơn vượt mọi gian khó. Đừng sợ thua, ta chỉ thua vì bỏ cuộc, có mì lô cùng ý chí thì nên.
chiến công trong môn thi này lướt nhanh hơn chàng sơn vượt lên dẫn trước rồi này thấy sắp thua chàng tuy rất chi hoang mang bất ngờ nhưng chẳng có Milo cuộc đua trở nên bất phân thắng bại tuyệt quá hương vị sữa quá thơm ngon và cùng nhiều khoáng chất cho chúng ta khỏe hơn nhiều cuộc thôi lo gì đã có Milo luôn tiếp thêm nhiều năng lượng ta chinh phục cuộc chơi chẳng hề có cái gì khó có Milo luôn ở bên ta mỗi ngày luôn động viên ta mỗi giây mọi thử thách chinh phục ngay trong xò bi sẽ chỉ về thất bại ta có chí thì nên hey ya hey ya hey ya vì của Milo ngon tuyệt lắm các bạn ơi chẳng hề có cái gì khó có Milo ta quyết tâm phải chinh phục hết mọi cuộc chơi hey ya hey ya hey ya ta hãy luôn thật vững vàng ta cùng vượt mọi gian khó đừng sợ thua ta chỉ thua vì bỏ cuộc có Milo cùng ý chí thì nên thật là khó chẳng trách có ngang tài và cùng ngang sức nên nàng không biết chọn ai nhỏ nhỏ vua phân sự xem ai thắng ai phân định xem ai đánh bại xứng đáng hơn đây mọi trận đấu đằng sau có Milo luôn ở bên sân mỗi ngày luôn động viên vì mỗi giây chẳng hề có cái gì khó có Milo người chiến thắng fan này các bạn chọn ai. Đừng quên đăng ký kênh Liêu Liêu để nhận được video mới mỗi ngày nhé. Còn đây là những video hay nhất trong tuần, các em đừng bỏ lỡ nha. Tom, good to see you. Thanks for joining us. What's it like being part of this side after 2 wins from 2 games so far? Yeah, it's great. You know, there's a great atmosphere going on. We've been, a couple of lads come back, Livy and Salty. That was a great experience, and Livy was a good captain the other night. So, yeah, it's really fun at the minute, and we just want to carry it on. Having players like that around you must be fantastic for you as a young player developing his career. Yeah, you know, I've played with Livy and Salty for a few years now, but, you know, they've always got great experience. Both come from the IPL. So there's a lot going on, and they've seen a lot, so, you know, it's great to learn from. As I say, 2 wins so far. That game the other day was an absolute dismantling, wasn't it, of Leicestershire? You did a really fantastic job in that game. Yeah, no, we were fantastic up top. The bowlers did the damage, restricted them in the power play with a few wickets, and then we just carried it on. Carl and Darryl through the middle were great as well, and Parky bowled great. So, we stuck to our plans, and then batting-wise, we were very destructive and didn't give them a chance to settle. For you personally, you've been involved in 2 finals days now. Is that one from last year, though, still sticking in your throat a little bit? Yeah, a little one. It did hurt a bit, from the position we were in. We were really backing ourselves. But that's what the pressure of a final does. But with the squad we've got this year, there's no reason why we can't go there again. I'm going to say, how confident are you all that you'll be able to get there again this year? Yeah, no, very confident. If we can all play to our abilities, and people stand up each game, then I don't see why not. For you personally, I know you've been working very hard on your batting in particular. How do you feel that's going for you so far? Yeah, pretty well. I think I've shown a bit of promise in the 4-day stuff, so just trying to convert that to the T20s. I've been trying to hit it out the park in the championship a little bit, so hopefully I can carry on the same in this. Yeah, you've been very much a mainstay of the T20 team, haven't you, since coming in? What is it about this format that you particularly suits your game, do you think? I'm not sure. I just don't like going for runs, so when I can do that, then it helps the team, and I keep playing each week. So as long as I can help the team, that's all important. As far as Nottinghamshire are concerned, the Outlaws, Shaheen Afridi, the guy that everybody's talking about, obviously, how much are you looking forward to playing against a spectacular player like that? Yeah, I know he's a great player, bowls with great pace, and, he can give it a whack with the bat as well, so it'll be tough if we can get him out early and, see off his overs with a few runs off him, then it should be great. And how much do you love playing here at Old Trafford, under the lights, fantastic conditions like this today? How much are you looking forward to it? Yeah, perfect. The crowd really get on our sides, and, it's quite formidable playing out here, so I'm really enjoying it, yeah. Go well tonight. Thanks for joining us, Tom. Cheers, thank you very much. Well, we're going to have a pitch report. Sometimes pitch reports can be so intriguing. Not here at Emirates Old Trafford. What you see is what you get. You could play on this pitch for a fortnight, I can tell you. This is the 4th match that's been played on it. 2 T20s during the week. The women have just played on it, and the men are going to play on it. We'll have a little look at it for what it's worth.
you can see that there's a nice covering of grass on it, but it's not live grass. It's dead grass is this. Look at these cracks. You might just be alarmed by these cracks. No, not at all. They won't move at all. I doubt whether it'll spin too much. I could tell you, this is a batter's paradise. I'm nearly 90, and I reckon I could have a bat on here. Boundary-wise, over there, it's nearly in the centre of Manchester, but the wind's blowing this way. So if you're a right-hander stood at this end, whack it over there. If you've got the power and you've got the muscle, whack it over there. Be careful that side. Arctic monkeys are coming here later on, and that's where they're going to be. Just be careful going that side because the wind's against you. It's a pearler. अरे ये सब क्या हो रहा है? अरे उनसे लंदन ने ब्लैक फ्राइडे पे फ्लैट 50% सेल लगा दी है। क्या? जी हाँ, जब उनसे लंदन लगाएगा ब्लैक फ्राइडे पे अपने तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर फ्लैट 50% ऑफ सेल, भगदड़ तो मचेगी। Buy online or visit our nearest store at Bashir Mall, Rahim Yar Khan. As you've seen, Lancashire Lightning have won the toss and they have decided to bat. The team sheets are in. We'll start with our visitors this afternoon, the Nottinghamshire Outlaws. And they line up as follows. Number 10, Alex Hales. Number 33, Joe Clark. Number 82, Colin Munro. Number 5, Stephen Mullaney. Number 23, Tom Moores. Number 21, Samit Patel. Number 14, Matt Montgomery. Number 45, Lyndon James. Number 10, Shaheen Afridi. Number 4, Conor McCurr. And number 20, Matt Carter. And your Lancashire Lightning side for tonight is as follows. Number 3, Luke Wells. Number 7, Phil Salt. Number 15, Stephen Croft. Number 75, Daryl Mitchell. Number 23, Captain Liam Livingston. Number 77, Colin de Grandhomme. Number 17, George Bell. Number 2, Tom Hartley. Number 14, Luke Woods. Number 25, Sakib Mahmood. And number 28, Matt Parkinson. Where's Bumblegum? Very good afternoon, warm welcome. It's chaos down here, I have to say, because David Lloyd has turned up and everything has just gone completely out the window. That's no surprise, is it, at all? Let's be fair. Kate Cross has come to join me. Kate, many congratulations on your victory this afternoon. Yeah, we needed that one. I can imagine Yeah. the confidence that you will get from this and the feeling that you have must be fantastic. Yeah, we've not been far off either. I think it's been quite a frustrating start for us as a team.
but that felt really clinical. It felt like we fielded well, we bowled well, and we batted well. So it was kind of, we put everything together today, which is what we've been talking a lot about. And that's what you've been lacking, hadn't it, so far, I guess? You'd seen areas where you'd put bits of a game together, but today you really managed to get everything all in the one game. Yeah, and I think it started with our fielding. We spoke in the dressing room about creating our own energy, because teams aren't going to hand us wins. We've got to work hard for them. So yeah, just really pleased for the girls. It's been, like I said, it's been a tough start to the season, but winning at home with a great crowd. I think there's 2,500 people in watching us, so yeah, just great to be a part of. Terrific knock from Liberty Heap, and then to see Deandra Dottin smashing the ball all over the place towards the back end there as well. I mean, everybody must have been really enjoying that. Yeah, Liberty, 19 years old, she's still learning the game, but how she hits the ball, it's really exciting. She's got one way of playing, and you can forgive her if she gets out caught, because that's kind of how she plays. But Dee Dee, that was her destructive best, I thought. She gave herself a chance to get in, and then those shots down the ground, like she's clearing the men's boundaries easily there, so it's great to see. We want to see more of that, hopefully, in the not too distant future. Turning to tonight's game then, Nottinghamshire Outlaws, obviously Lancashire, 2 games, 2 wins so far, and that maybe sent a bit of a message out against Leicestershire the other night. The way they absolutely steamrolled them send out a bit of a message, I think, to the rest of the counties in this game. Yeah, I think that kind of happens every season with Lancashire. We've got such a strong squad. You know, you've got so many people, like Dane Villas sat on the bench, is a remarkable thing to say as a Lancashire fan, but it goes to show the depth that they've got. But the way they've been playing their cricket has been so impressive, and how they bowled here the other night on Thursday, that's what set the game up, and it allowed then Salty and the batters to go out and play with a lot of freedom. But yeah, the bowling attack as well, when you add Saqib Mahmood into that, Luke Wood, he's been bowling really well. So I think it's just the balance of the team that they've got perfect at the moment. Yeah, I mean, how impressed are you with the balance of that team, particularly now with Salty and Liam Livingston coming back, and Josh Butler to come as well? I mean, the strength they've got in the side is incredible, isn't it? It is, it's incredible. To think that we've got Josh for 10 games, I think it is, which is probably unheard of, but he's going to add so much to the team. But Salty and Livy have just come back from playing in the IPL. They've had, you know, cricket under their belt. They've got a lot of confidence. They love playing at home, so just excited to see them to get a go tonight, because obviously they're chasing the low total on Thursday. It didn't really give them a chance to get the audience, I guess, seeing what they can do best. Yeah, the fact that they've decided they want to bat first, I mean, that's what Lancashire would normally do under these sort of circumstances anyway. They always like to bat first if they can. But the fact that they've got a huge crowd here to be able to do it in front of as well, if they can put on a massive total, I mean, that would really get everybody up and excited. It really is a home advantage playing here, because the crowd is, it really is a home crowd. They'll get stuck into the knots lads if they make mistakes in the field, and that's always the difficulty of coming and playing here. So yeah, I'm just looking forward to the game. They've got confidence 2 from 2. I think it's the right decision to bat first. It's just a little bit slower, and it's just getting a bit drier, so there'll be a bit of turn in the second innings as well. Great stuff. Thanks for the moment, Kate. Speaking of the crowd, we've sent Agent Bumble out there into C stand. Where are you, David? Where are you? Well, I love going out in the crowd. It's going to be rocking here tonight, and I've found these lads here, and I'm going to ask them, you've got to ask them who you're supporting, Lancashire, just for Liam Livingstone. Why Liam Livingstone? He's a great player. Normally, recently played for Punjab Super Kings in IPL. But he's been injured for a while, hasn't he? Yeah, injured for. He's a good player. I'm a good favourite fan of him. You've not come all the way from the Punjab to watch Liam Livingstone tonight, have you? You haven't? Yeah. Just because of him. I mean, just because of him. Brilliant, great to have you here at Emirates Old Trafford. What do you think of it so far? Sorry? What do you think of it so far? Start again. What do you think of it so far? He can blast it tonight. This is the best stadium in the world. Yeah, one of the best stadiums. You know. Brilliant, good lads. Right, let's move along. We'll have a word with these little lads. You're a Lancashire fan. Yeah, do you know who's your best player? Probably Liam Livingstone or Phil Salt. And Phil Salt, he's come from Sussex, hasn't he? He's a good player. What about bowlers? Bowlers, I'd say Anderson or Mahmood. Anderson or Mahmood. Now, Anderson's not playing, but did you see him? He was just warming up. So I reckon he might be fit for the test match. But Saqib's playing. Saqib's here tonight. Excellent. Great. Have a great night. Thank you very much, David. Now then, I think they've... Now, have you... Yeah, are you at the right ground? I think so, yeah. Who are you? What team are you? We've actually come up from Southampton for Team Dan, because this is my son. It's a stag weekend.
You getting married? He is. But not you. Oh, sorry. Yeah. Are you? already married to my mum, mate. Yeah. Have you been married before? Have I been married before? No, this is my first time. Oh, well, good luck with that. Good luck with that. We saw you in Sydney many years ago. Don't interrupt. Who's this here? This is his brother. I'm him. He's my best man. You're the best man. But are you a cricket team as well? Are you? Yeah. Cardiff University. We're Cardiff University Cricket Club. Cardiff University Cricket Club. You look a set of nutters to me. Well, he causes chaos wherever he goes. I think Kate apparently knows whose stag do that is. More on that later, perhaps. We shall find out. In the meantime, if you need a reminder of the rules, here we go. The wait is finally over as I welcome you all to the Lucky shirt? Lucky chair? Unlucky Sherry? Oh, Liz. Quiero conmigo que haya nada negativo, mira vengo positivo y tengo ganas de. Quiero conmigo que fue nada negativo, yo no tengo positivo y tengo ganas de. Paso de la cama, paso de la cama, paso de la cama. मिल गई लिज अब मैच का मजा आएगा Pakistan has won the toss and they've elected to bat. Each match is played by two teams of 11 players. Some are batters, some are bowlers, and there's one wicketkeeper. Both teams have a chance to bat and bowl. Look out for the coin toss. That's how they decide which team bats or bowls first. Each team has 20 overs to score as many runs as possible. The team with the most runs wins the game. One over is made up of 6 good deliveries from the bowler. To score runs, batters hit the ball and run between the stumps. If the ball reaches the boundary, it's 4 runs, and if it gets there without bouncing, that's a 6. While the batting team are scoring runs, the bowling team are trying to stop them and get the batters out by taking wickets. A few ways batters can be out are bowled, caught, run out, stumped, and LBW. Watch out for signals from the umpires, 4s, 6s, wickets, and these when a bad delivery has been bowled. Bad deliveries add runs to the batting team's score, and the bowler must bowl an extra ball. If you see the umpire doing this, the next ball is a free hit, and the batter cannot be out bowled, caught, LBW, or stumped. And those are all the basics you need to know to get behind your team in this year's Vitality Blast competition. We are looking forward to what should be an absolutely sensational game here tonight. Lancashire Lightning versus the Nottinghamshire Outlaws. Kate Cross is with me after victory earlier on today. Lanky's here as well. He's just been having hugs with David Loyes, would you believe, causing chaos wherever he goes. So much to look forward to in this game. We've spoken about the quality of the side that Lancashire have this season, but Nottinghamshire as well when you look at it. Shaheen Afridi, Alex Hales, Matt Montgomery, they are a quality side all the way through as well, aren't they? Yeah, they are. I know it's different formats, but they had a really positive start in the county champs as well. So as a club, they've got a lot of confidence. But yeah, having the likes of Alex Hales, so excited to see Afridi bowl tonight. He's obviously such a huge part of the Pakistan team now. So yeah, I think it'll actually be a really evenly matched game. And obviously the team that is able to hold their nerve the longest will hopefully be the team that wins, and fingers crossed that's Lancashire. Lancashire, of course, winning the toss and deciding to bat, so they will be facing Afridi probably fairly early on. What sort of a tactic do you have when you've got a bowler like that? Do you go at him? Do you try and just bat him out, or what do you think? They won't bat him out. I think when there's pace on the ball, it's a lot easier to score, especially in the power play, and that's what the likes of Phil Salt, Liam Livingston, Luke Wells, if he's opening the bat, and that's what they try to do, take advantage of only having the 2 fielders out. So they'll just be looking to jump on any bad ball that he bowls. Obviously that's your international
prowess, I guess, that you've got when you come into a team. You want to be the one that's taking the wickets, but yeah, they definitely won't bat him out. We've got some old friends that have come here as well. Obviously, the likes of Peter Moores, former coach here, Stephen Mullaney, former player here as well. Stephen Mullaney's just had the captaincy given to him as well. Liam Livingston's taken the captaincy here. How much do those generals in the field have an influence on what goes on this pitch here tonight? Massively, honestly. Captains can win your games of T20 cricket. How Liam will use his bowlers will be massive. Even how they affect the batting order, you know, if they send de Grandhomme in earlier to have a go. But yeah, I think Mullaney, he's played so much cricket, he's so experienced. I think he played 100 games here before he went to Notts, and I feel like he's been at Notts for ages. So yeah, they'll be, obviously they've named him captain for a reason, so I'm sure that he'll play a big part as well. As far as Lancashire's bowling unit is concerned, you mentioned the likes of de Grandhomme and obviously Wood. We want to see Saqib Mahmood obviously in among the wickets again. It'd be great for him to really push on now after taking 3 the other night, wouldn't it? Yeah, I think he's just gaining his confidence back as well. He was obviously out for a long time with that back injury. And when I saw him bowl here in the County Champs, it looked like he wasn't just quite at his best, at his peak. And I think what we saw the other night was him getting the ball through, bouncing players, using his pace. So yeah, it's great to see him back. You think Rick Gleeson's not making this team at the minute. He's obviously working through some stuff. And again, it just goes to show the depth that Lancs have got in this squad. And teams that have got lots of depth get themselves through to finals. Yeah, absolutely. Well, it was an absolutely fantastic victory for Lancashire the other night here on Thursday when they absolutely steamrolled the Leicestershire Foxes. Let's take a look back at that game with some of the highlights. Too long on. Wood bowls. That's off an edge down towards the third man boundary, and it's 4 runs. Way back to full fitness. Bowls a full length ball, which is hammered high out towards the leg side by Welsh. 1 bounce out towards the rope. Here's Luke Wood, bowls. Oh, that's a pull, it's a top edge pull out towards the leg side. It'll land safe, I think. No, Hartley comes up, takes a terrific catch. Got there in the nick of time, Tom Hartley. Into Welsh, and he squirts that one out towards Bell, who takes the catch at backward point. 2 wickets in the over. Another leading edge, this time by Welsh. De Grandhomme to Lilly, that's clobbered back over the bowler's head, down towards the boundary, at long on, 1 bounce, and it skips over the rope. Grandhomme to Lilly, well, that squirts away into the onside. It's such a simple catch for Daryl Mitchell, and Lilly departs for 5. There's De Grandhomme in on his bowled Ackerman, down on 1 knee, trying to slog sweep it away through mid-wicket, and the ball clatters into his off stump. You are you. तो बाबर है. हर पाकिस्तानी में बाबर जैसी ना रुकने वाली इस पावर को यूफोन कर रहा है. एम्पावर पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G के लिए अनस्टॉपेबल तुम ही दो. This is in the air leg side. Is a catching opportunity? No, just falls short of the fielder, just running round to his left-hand side. He does well in the end as Bell. Again, on the leg side, just clipped away, very fine. It's going to run to the boundary. It's going to be 4 runs here, and signalled by umpire Mallender as well. Just didn't quite get the line right there at the Grand Hope. Around 48 for 4 it remains. 2 balls left to the 9th over. This is in the air over the top of extra cover. It's going to be a big chase out there on the boundary. Will he get there? No, he won't. It's going to be 4 more runs. So some boundaries at last being found here. Patel's on 7. And he's gone high here. Has he got enough on it though? That's the question. I don't think so. I think it's going to be caught, and he is. The catch has been taken out there. It was up there for a long time. Had to come in. Did Luke Wood to take the catch. Balls to Mulder. He's on 25. This is in the air again. This could be caught. It should be caught, and it is. Mulder can't quite believe it. He's found the man out there at deep mid-wicket on the boundary, just coming in. He's gone for 25. It's all falling apart here for Leicestershire. To be a successful cricket. Ahmed, and that one's a short one. Does he get anything on it? I think he does. And he was looking there just, I think Ahmed it is who's gone, looking maybe to just lift that ball away again. I find it amazing. Swindles comes down towards Matt Parkinson, hits it back over his head, and Mitchell into Parkinson. Oh, that's gone high. More height than distance, and it's
Phil Salt takes the catch. 8 down now so far. Goes again, big top edge. It's scooped up toward kind of extra cover. Who's underneath this thing? Is Livingston. And the captain takes the catch. Good catch. It's a really good catch. Mood to Davis. Another leading edge. And Mitchell takes the catch. And that's that. Back into Wells. That's hammered away through the onside. And one bounce out towards deep mid-wicket. And he gets himself 4 runs. Goes again, Wells. There's a man out on the deep backward square leg. And on this occasion, he's gone. He comes over the wicket to Croft, who leans back and carves this ball away for 4 more. Behind Mulder in to Croft, swatted high towards deep backward square leg. Oh, all the way for 6. What a shot from Croft. 6 down towards the hotel. Slip in place. Croft takes it off his hip, pulls it behind square on the leg side and gets 4 more. They've gone really nasty today. It's been good to watch. Shot Salty. Yeah, back over the bowler's head all the way. 1 bounce actually, just this side of the rope. It's gone for 4. Salt on to 22 and going again over mid-off all the way this time, definitely. Couple of rows back towards that long off boundary. 4 and then a 6 for Salt. Just make sure you get good connection through the hands. Salt off the back foot this time. Oh, That's a great catch. Has he caught? He's kept it. Yeah. Oh, it's a fantastic catch. Bit of sort of negative playing. Parkinson to Mitchell. Thumps it back over the bowler's head. 1 bounce and 4 runs to end the 10th over. It's formidable. Now this is in the air. Has that got enough on it? It has indeed. It's going to go over massive 6. It is into the crowd just below the point. Wow, that is big, and they're well on their way. And he's bowled 2 balls, make that 3 now, and that is winning runs, and that is just cleared away. Has it gone over the rope or not? We wait to see. It has with a 6. They've got there with a 6. Yeah, it was a cracking way, wasn't it, to start the first home game of this season's T20 Blast. Victory on Thursday against the Leicestershire Foxes, and on a breezy day here at Emirates Old Trafford, it's Lancashire Lightning against the Notts Outlaws, with Lightning looking to make it 3 wins from 3. And for the Outlaws, this is their first group game. Stephen Moore is alongside me, former Lancashire player and title winner from 2011. All those moons ago, Stephen. It does feel a long time ago now, that's for sure. You and I were last together at finals day last year. Yeah. Now, Keaton Jennings sat there on Thursday, and I asked Keaton Jennings whether he'd got over finals day from last year, and he said, no, I haven't. Have you recovered from finals day last year? No, that was quite an experience, wasn't it? That, I mean, the highs and the lows, the celebrations, the non-celebrations, it was incredible scenes. But that's what's brilliant about this game, isn't it? I mean, it can produce events like that. And I guess a sense for Lancashire to try and go one better this year. They're too good a squad not to, and we were just talking about this off air earlier. There needs to be more silverware in this club based on the quality of the squads that they've been able to put together. It's the depth, the consistency in winning games. So that needs to turn into silverware, and I think they'll be disappointed this year if they don't go one better. Is it a case that they should be winning more competitions? Absolutely. Yeah, I mean, they're putting themselves in the right position. They're asking the right questions at the right time. It's just getting over that final hurdle. And for a club like this, with the squads that they've been able to put together, and importantly the consistency of performances, especially in one-day cricket, that needs to turn into some more silverware, and I think that'll be the standard this year. Well, we'll see whether they can continue what has been a good start. They beat Derbyshire at Edgbaston in the blast-off fixture at the weekend, and then the victory against the Foxes on Thursday here to kind of try and make it 3 wins from 3, with Luke Wells and Phil Salt to open the batting for Lancashire Lightning. They've won the toss. They're going to have a bat first. Our 2 umpires are heading out to the middle as well. It is, as you can see, if you're watching on Lancs TV, or for listeners on the BBC Sport website and app, it is an absolutely gorgeous day. It's a beautiful evening. We've had the first T20 match between Thunder
and sunrises, and now the second T20 match, and the weather could not be any better. Who says it always rains up here? Exactly. This is absolutely. You could be anywhere. You could be in Portugal right now. It's absolutely brilliant. You could be, but we're at Costa del Salford. We're not too far away from the start of our second game in this T20 doubleheader. So ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, with a guard of honour from South West Manchester Cricket Club, please welcome our umpires this evening, Peter Hartley and Hassan Adnan. And now, ladies and gentlemen, please give a big warm welcome to our visitors tonight, the Nottinghamshire Outlaws. Emirates Old Trafford, are you ready? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, please welcome the Lancashire Lightning. गाइस मेरी लूजिंग स्ट्रीक तो खत्म कराओ। हम आ गए हैं जीतने के लिए। चलो चलो खेल चलो on your left right करना। Wells and Livingston and Salt rather leading out Lancashire here as they set about putting a total on the board. What on earth that total will be and what is a good total? I defer that to Stephen Moore. Well, it's an interesting ground. The pitch is right over on one side, so you've got a very big boundary out towards the new hotel area, and to where the Arctic Monkey stage is quite a short boundary. But this is going to be some matchup. Shaheen Afridi is not slow, and if that wicket's got a bit of pace into it, this could be fireworks with Phil Salt and Luke Wells. They will not hold back, that is for sure. No, I suspect not. They will give it plenty at the top, won't they? Wells and Salt. Shaheen Afridi is going to bowl the first over of the match. He's some signing, isn't he? Yes, but that's what's brilliant. I mean, that's what we need in this game. You know, players like this coming in. Obviously, you got Salt, who's just been over to the IPL as well. This is why the crowds, they want to come and watch this kind of cricket in the sunshine here at Old Trafford. So yeah, I'm really excited. Got a slip in place. I've got Luke Wells on strike, and as the music starts to fade down, we'll get this second T20 underway. Can lightning follow thunder? I didn't mean that. I wasn't scripted. Is Afridi in and balls. It's driven away. Oh, over the top of cover, just about. I mean, it was flashed firmly by Salt. Bang up and over extra cover for 4 runs. That's a typical Salt shot. It was up there, and he's not going to hold back. If it's in his half, he just throws his hands at it, and with the extra pace of Shaheen, just managed to get it over the top of cover there, who is quite a tall chap. I don't know who's standing at cover there. I think it's Lyndon James. Lyndon James, is it? Yeah, he's quite tall. I think that it was almost kind of beyond his fingers before he jumped up, wasn't it? He was absolutely hammered away. Pretty emphatic start to the match. Afridi bowls again. That's guided down to third man by Salt for a single. I was going to say thick egg, but that'd be a bit cruel. Well, no, I think that was definitely an off drive. That after it had gone down to third man, the batsman just makes it look like, yeah, I definitely meant it to go down there. That's for sure. I'd love to say I never did that. Salt moves on to 5, and as indeed the Lancashire Lightning. It's got Afridi bowling from the Brian Statham end. Luke Wells on strike for the first time. Ground is filling up beautifully. I think they sold in excess of 10,000 tickets prior to a ball being bowled. Obviously, you got your walk-ups as well, which you can have. Afridi to Wells. Oh, that loops away in towards the onside. And a rather startled-looking
Luke Wells peers rather nervously back down the pitch. He's having a good look at the wicket. He's not quite sure whether there was a bit of swing or whether the ball got stuck on the wicket a little bit, but he was definitely through the shot sooner than he expected and got a thick leading edge that just dropped, thankfully, in the middle of nowhere. This pitch is the same pitch that was used for the women's game earlier on today. Afridi's into Wells. It's full length and that squirts down to third man. That is definitely an edge. A pass first slip down to the boundary for 4. Yeah, and that was definitely some swing there from Shaheen. Beautiful away swing, really full, giving a good chance to swing. And all Wells could do was a thick edge, and if there'd been 2 slips, that would have been comfortably taken by second slip. I think he's only been in the country a couple of days. Shaheen Afridi kind of joined up with his teammates back end of last week. That's what these guys do now, isn't it? They're going to fly in, play a bit, fly out. Afridi to Wells. Oh, he's swinging and missing. And the ball again shapes away past Wells into the gloves of the keeper. It's an absolute beauty from Afridi. He doesn't quite know what happened there. He thought he might have LBW or bowled or anything. A beautiful delivery, a little bit of shape. Just must have missed the top of off stump by a whisker. I think he was, he was appealing for a little caught behind. Well, that's not going to happen. I appeal for LBW. That's not happened. Are the bails still on? Went for pretty much the whole lot there. It was a lovely ball from Afridi. Final ball of the first over. Wells on 4. And Lancashire Lightning a 9 without loss. Afridi left arm over balls to Wells. That's pushed up towards mid-on. And they'll get through for a single. Alex Hales at mid-on for the Notts Outlaws. Stops the ball, but doesn't stop the run. And that's the first over gone. Lancashire got 10 runs off it, so a bit of an all-action start, really. Yeah, and that's what you can have with someone bowling the pace that Afridi can bowl there. You can see the Lancashire batsmen a little bit late on the delivery, trying to just find their rhythm and trying to get into this match. But yeah, a couple of edges and a streaky shot, and they're off and running. They are off and running, yeah. Conor McCurr will bowl the second over from the Jimmy Anderson end, of which he might start in shade. The sun a little lower in the sky and shadow being cast from the point and from the pavilion, which is looking pretty full. Of course, one side of the ground is still under renovation, the hotel. So here's McCurr running into to Wells. He's on 5, just dabbed away into the onside, up to mid-on, where Hales fields again, and there is no run. So there's some really strong-looking names across both these two sides, and that hotel, which is part building site, part hotel, might get a bit of peppering tonight. I mean, that's quite a big hit. It's not beyond these guys, is it? No, and not the way they strike the ball these days, that is for sure. There's McCurr sets off again. Wells on 5. In and bowls, muscled out towards the onside. That's gone high, out towards the hotel. All the way for 6. As if to back up our point, Stephen. No matter how big the boundaries are, these guys can clear them. Geez, that is a big hit on any ground. That is to the long side, in fact, to the long corner of the long side. And yeah, comfortable, using his feet, coming down, and beautiful shot over wide mid-wicket. Long levers of Wells there. 16 without loss, first 6 of the evening. McCurr bowls to Wells, flicked off the pass to the right of short fine leg. Samit Patel's chasing after it. He ain't going to get to it. And it's 4 more runs. Well, we saw power in the previous boundary. That was a little bit more finesse. Yeah, and you can see he put the bowler under pressure by using his feet to bowl before. He stayed in his crease there. Bowler drags his length back a little bit, and Wells could just tuck it off his hip past my favourite position there at short fine leg, Samit Patel. Happy new T20 blast. Stephen Moore's taken 1.5 overs to get in the fact that he doesn't like a short fine leg. Here comes McCurr to Wells, just back of a length, and he's rocking back, pulling the ball away for 4 more runs behind square. Up off the back foot, flicked off the hip, 24 without loss. Might as well put a
the yellow and green road cone over there for all that position is worth. When the bowlers are bowling like this and batsmen are hitting it like that, unless it goes absolutely straight at the individual, you got no chance. and that one was short down the leg side, and it was easy, just a free shot for Wells just to help it on its way, and surprise, surprise, I got rid of short fine leg. Yeah, Summit's disappeared. Here's McCurr to Wells. It's again turned off the hip. It's up off the back foot and working it away to Montgomery at deep backward square leg. Well, Wells has rattled his way up to 20. He faced 9 deliveries. 25 without loss with a ball left of the second over. It's the same on Thursday, actually. Kind of Wells dominated the partnership. You'd expect Salt to be the kind of the big headline act, and actually Wells has come out and smoked it around. Yeah, well, I mean, I think it's nice when you've got two batsmen that have different statures, play a different type of game, depending on the way the pitch is playing or the bowlers. You can both dominate quite easily. So yeah, good combination. Salt on strike. Conor McCurr in and bowls. Plenty of bottom hand on this as he drills it up towards Mullaney. Stephen Mullaney at mid-on, who skippers the Outlaws in the T20 blast. Former lanky man. End of the second over. 26 without loss. Salt on 6. And Wells unbeaten on 20. It's a day for short sleeves and for sunglasses and for caps on backwards and for beers. They're having a great time, aren't they? Yeah. Yeah, looks good. Ground filling up nicely. In fact, a couple of awkward times, I suppose. I mean, 6:30 on a Saturday evening. Certainly Thursday at 12:30 was a little bit of an awkward one, wasn't it? But decent numbers in on Thursday. We've had good numbers in through the course of the day. I thought it was a really good turnout for the very start of the first match, the Thunder game, and that built through the course of that match. And they were treated to a home win a little bit earlier on, first of the summer for Thunder. Here's Carter into Salt. He rocks back and muscles the ball away to deep backward square leg. I think 1 bounce 4. It is. Just this side of the rope, but not by much. Almost went the full distance there. But you do not want to bowl that length to Phil Salt. He dragged it just a fraction short, but quick on his feet, and he absolutely smashed it almost perfectly, dead square of the wicket, easily dissecting the two fielders out in the boundary there. Yeah, there's 2 on the rope on the leg side in front of the new hotel building. Salt just shuffles back and works it off his pads up to mid-on, and there's no run. Sorry, they've got through for a single. 31 without loss. This is the beauty of having the left-right combination. Now he has to bowl to Luke Wells, who is hitting to the short boundary. It's very difficult for a spinner in these situations. Wells back on strike. Deep mid-wicket, kind of wide long on to that shorter leg side boundary. Carter to Wells. He's trying to work it to the leg side, just wraps him on the pad. Deflects back down the pitch and there's no run. He's a bit of a ferocious twirler of the bat, is Luke Wells. Wow! Now that is some serious speed. Again, your fans भी ना. Oof! His speed का तो scene ही कुछ और है. Hi, my fan. Ready हो जा. Selfie या autograph? क्या speed होगी? 145, 150? अरे 250 Mbps. PTCL flash fiber है ये. ये तो हारिस और नसीम से भी ज़्यादा fast है. With PTCL flash fiber, हो जाओ तैयार to experience the world of lightning fast speed of up to 250 Mbps. इतनी consistent speed? आज तक नहीं देखी bro. Call 1218 now and bring PTCL flash fiber home, the fastest internet in town. He's twirling away again. Down he comes towards Carter. It's hammered up to mid-off. Oh, sharp pick up and throw by Afridi. Trying to run Wells out. Got through for a quick single. Wells moves on to 21. Score moves on to 32 with that loss. Yeah, the game now, as a fielder, you're going to be under pressure every time. The batsmen are so quick. Almost tip and run now. Carter with his off spin from around the wicket, bowls to Salt, who goes back and works it to
Carter pick up and throw towards the stumps. Nifty work off his own bowling, trying to run Phil Salt out. Kind of juggled it first. He as well, did, didn't yeah. he? If it wasn't for the juggle, I think Phil Salt would have been struggling there. He ended up throwing the stumps down, but that little bit of juggling with the ball gave Salt an extra couple of meters. Been let off by a good juggle. Final ball of the third. Here's Carter to Wells, who's down the pitch again. It's hit along the ground to long on, where Hales comes up from the boundary to complete the fielding. So that's 3 overs gone. 34 without loss. We've got a bloke dressed as a chicken, I think. Why not? I think it's a chicken. Looks like a homemade chicken. Sure, you come dressed as a chicken. But why not? The sun's shining. Why wouldn't you? Indeed. Yeah, absolutely. But looking for this opening, I mean, it's obviously quite early, isn't it? The blast will start before the football season's finished, but at least we've been fortunate to have good weather. It's beautiful, isn't it? Yeah. Definitely makes it. That's for sure. I'm sure with as the ground fills up, which it is already doing at the moment, you can see more and more seats being covered. The atmosphere in here will be great. But let's see spin from both ends. So 2 overs of spin in this power play. We've had 3 overs of the match, so we're halfway through the power play, and Stephen Mullaney's turned to Samit Patel from the Jimmy Anderson end. Pulls around the wicket to Wells, up and over extra cover. Bouncing out towards the boundary, and all the way for 4 runs. 38 without loss. yeah, really didn't get much of that ball at all, but you could see what he was doing, trying to open up the offside. All the fielders in. It's a free hit if he can clear the ring, but he managed to only get half a bat on it, and therefore it only just managed to make it to the offside boundary. Even half a bat was enough, wasn't it? Wells to 26 not out from 13 balls. Again, looking to hammer the ball away, but finds Mullaney at mid-off. He's always got a smile, hasn't he, Stephen Mullaney? He is, yeah. He's a chirpy chappy. Runs in the wicket. Patel to Wells. And once more, this time he got a hold of it much cleaner. 4 more this time. Again, over cover, out towards the point. Yeah, 42 without loss. Lovely clean strike that. You could see the difference there. He was balanced. Crisp swing of the bat. And Samit Patel, who does like to dart the ball in full to the batsman, try and tie them up. He's going to have to think about his field here or his liner. Patel around the wicket again to Wells, who's driving up to Mullaney. Oh, burst through his fingers. Mullaney at mid-off. We'll catch up with it before it reaches the boundary. Wells comes back for 2. And, well, the first chance created. It was hit firmly, Stephen, wasn't it? Went straight to Mullaney. It was pretty much exactly the same as the ball before, but this time Wells hit it straight at the fielder, and he'll be disappointed he didn't take that. It was going quick, but he should have taken it. 32 not out, Luke Wells. Patel bowls. That's heaved out through the onside. He doesn't time this one, and it just about bounces beyond the 30-metre circle. And he looks at his bat. Said, well, quite where I intended it to come off. 33 to Luke Wells, 45 without loss. Brings Salt back on strike. And Mullaney drops a man out towards the long-on boundary and deep mid-wicket boundary. The backward square leg. Short fine, short third. That's chipped up and over mid-off. Couple of bouncers for 4 runs. Beautiful shot from Phil Salt. Yeah, a lovely shot that. Cleared the front leg. Just hit with the spin over mid-off from the crease. Beautiful timing as well. Out the long boundary there. And Lancashire are really motoring now. And there'll be some head scratching by Mullaney and the bowlers as to how they can try and put a little bit of the brakes on here. Yeah, where do they find a breakthrough? We've got the look-alike competition going again on the... Bit of Ted Lasso. Let's go on the scoreboard. नाज़रीन, आपको नजर आ रहा होगा अवाम पेट्रोल के लिए जैस के डेबिट कार्ड का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। आराम से जल्दी सबकी बारी आ जाएगी क्योंकि जैस के डेबिट कार्ड है ना। तो अभी अपना जैस कैश डेबिट कार्ड ऑर्डर करें। 50 का डाल दिया है ना? जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Pretty happy with that
comparison, I think, that chap. He had a lovely beard, didn't he? 4 overs gone, 49 without loss. It's turning into a really good power play, this, for Lancashire Lightning. Notts Outlaws desperately trying to search for a breakthrough. They've gone back to Afridi. Over number 5. Luke Wells on strike. Here comes Afridi, running in from the Statham end. Well, that's defended, just jabbing the ball back down the pitch. It bounces beyond the reach of the bowler. Alex Hales comes up to complete the fielding. They get through for 1. And gets Lancashire to 50. Yeah, brilliant start by Lancashire here. And I'm sure Maloney and Notts would love to get a wicket here, just to try and just peg them back a little bit. 50 from 25 balls. Looking very confident out there, the Lancashire. The batsmen have a swagger. They do, don't they? There is a touch of the swagger about it, which I suppose you've got to have. T20 cricket, can't be shy, can you, I guess? No. Afridi to Salt. Just drops it to square leg and shuffles through for a quick single. Moves on to 17. Score moves on to 51 without loss. Just a little thing like that is, I think, playing here is important, isn't it? I mean, 6s and 4s are great, and that's what the crowd come to see. In terms of developing and building an innings, just a little turn to square leg through for 1, perfect. Absolutely, minimise the dots, and also, especially at Old Trafford, you know, turning 1s into 2s with the big boundaries, key to success. Wells waiting, something tall in the crease. Back of length delivery, up and over point. It's going to be 4 more, flashed away by Luke Wells. Those big long arms of his came into the fore then. Gets himself 4 runs up and over point. And it's gone into the hotel, it looks like it. So I'm not sure they're planned for that, but that was a beautiful shot. Just waiting. Afridi, pretty much a free hit there. Short, wide, sat up. And said, please hit me. And we need the magic box of balls, the all-important box of balls, I think. Oh, no. Nope. No, we found it. Excellent. It's disappeared underneath the kind of the metal fence that's, I think, there to stop the ball going where it went. Design flaw. Yes. I think that 3-foot gap underneath it is probably... That's the issue with it, isn't it? Yeah. 55 without loss. Here's Afridi. Full ball to Wells. That's a proper delivery, that, wasn't it? Yorker from Afridi. Wells digs it out, keeps the ball out, crucially from a Lancashire Lightning point of view. And that is typical of the way that 2020 has gone now. You would never think of going Yorker, you know, in the power play. You always used to talk about being aggressive and hitting a length hard and putting pressure on the batsman, but nowadays, you know, Yorker is a must ball. 2 left of the 5th over. Afridi in, forward as Wells, just squeezes the ball away off the front foot, up towards backward point, and there is no run. 55 without loss. Afridi will have bowled 2 overs after this. Presumably they want to keep him back for at least 1 towards the end, but Stephen Mullaney may be forced to turn back to Afridi. Be just a little earlier than what he would have otherwise thought. Into Wells, handsome looking drive, but straight into the ring of fielders on the offside, and can't get it past Lyndon James, a tall figure of Lyndon James. And that is the end of the 5th over. 55 without loss. Salt on 17, Wells on 38, not out. And we've got 1 over left of the power play, and I think Lancashire Lightning will be pretty happy with how they've gone about things so far. Yeah, these 2 batsmen are setting it up beautifully. Not quite sure what a good total is on this ground, with a long boundary and a short boundary on the other side. But they are definitely stacking their cards in their favour. Both batsmen looking really settled at the crease. And Nottinghamshire at the moment scratching their heads how to stem the flow. In comes McCurr and bowls. Jags back in a little bit to Salt, who brings the bat down and works it away to the leg side. No run. Yeah, that looked like it just, yeah, like you say, jagged back, which is a good sign for Lancashire. Put a decent total on here. That wicket's not going to get better. With that in mind, little surprise at Lancashire. Aslam bat first then. No, if the pitch is not going to get any better,
As McCurr bowls to Salt, that's cut down to backward point. Oh, and absolutely frantic looking single. It is Samit Patel at backward point, picked up and throwing towards the bowler's end. Salt wanted one then, didn't he? There's a bit of hesitation, but then, yeah, I take a single. Maybe a little bit closer than what he would have liked. 56 for that loss. This is the final over of the power play. Wells back on strike. He's rattled up to 38. Has he edged it? He has. Caught behind. McCurr strikes. Edge off the bat of Wells. Taken by the keeper, Tom Moores. And McCurr strikes, and the Outlaws at last have themselves a breakthrough. Yeah, that was a typical Old Trafford delivery there. Really came in, banged the wicket hard, tightened the batsman up, and Wells trying to hit that over long on cow corner area. All he could do was get a fine edge through to the keeper. But that's the kind of length that you often associate with Old Trafford bowler, really coming in, hitting the wicket hard, being aggressive, trying to tighten the batsman up. So he got the much needed wicket for Nottinghamshire. And there'll be a bit more spring in their step after that. They needed that. They did. That was starting to get rather uncomfortable, wasn't it, for the Notts Outlaws? But they've got the wicket in the power play. See the probability of a win. You see, I get a bit confused by these things. I don't know how they do a prediction at this stage of the game. But I like it though. It's a good prediction with Lancashire Lightning 65%, Outlaws. I'll say 34, although the maths doesn't add up because they've got decimal points in there. Trying to be. Why put decimal points on? Here comes McCurr. Balls to Croft. Again, that comes back into Croft. He's drilled up towards Mullaney at mid-off, and there is no run. I mean, that's trying to pretend you're a little bit more sophisticated than you are, aren't you? Having a decimal point. My model's so good, I will do the prediction to a decimal point. What was it, 65 point something, wasn't it? I think, for Lancashire. I'd like to know what drove the point 5. अनस्टॉपेबल है यूफोन 4G की सबसे बड़ी प्लस ऑफर। एंजॉय करो क्रिकेट वर्ल्ड कप मैचेस की एड्स फ्री स्ट्रीमिंग शॉक पे 40 GB और नॉन स्टॉप कॉलिंग मिनट्स के साथ पूरे हफ्ते के लिए। तो अभी *7777 हैश डायल करो क्योंकि सबसे बड़ी प्लस ऑफर से शॉक तो लगेगा। McCurr in and bowls, and Salt works the ball away just in front of square on the leg side, jogs through for a single. 58 for 1. Salt moves on to 19, brings Stephen Croft on strike. We've got 1 ball remaining of the first block of 6 power play overs. I like seeing Crofty out there. It makes me feel like I'm not that old yet. So keep going, Crofty. You're flying the flag. Still got some connection to the Lancashire team there, haven't you? McCurr to Croft. He's off the back foot and drives into the offside on the bounce to Patel at point. No run. End of the 6th over. 56 for 1. Salt 19 and Croft on 1. And Stephen Moore, former teammate of Stephen Croft, with us up here in the commentary box. We'll be hearing from Bumble and from Kate Cross as well. Kevin Howells will join us. So plenty of voices to keep you, I'm going to say entertained, but I'm having been a bit optimistic through the course of the evening. But 58 for 1 after 6. That is a pretty good power play for Lancs, Stephen. Yeah, they'll be happy with that. They've set the total up very nicely, and everybody in the change room will be feeling very positive now. And that's great. We're having so much depth as well. You can build that confidence. You can go hard, and you shouldn't see Lancashire take the foot off the gas now after that start. Well, the captain's going to bring himself into the attack, Stephen Mullaney. Of course, the captaincy has been kind of that of Dan Christian for some time, hasn't it? Notts Outlaws, and Mullaney is their 4-day skipper, but with Dan Christian no longer Notts Outlaws player, Mullaney gets the job of skippering all formats
or at least the 2 formats for the Outlaws. As that's played off the back foot by Salt. Just easy the ball up towards mid-on. McCurr jogs up to complete the fielding. Salt moves on to 20. 59 for 1. And that brings Croft on strike. Recently, Stephen Croft brought up his 200th first-class game for Lancashire. It's very impressive, that, isn't it? Mullaney balls to Croft. Turns out across his pads out to deep backward square leg for 1. 60 for 1. He was the first Lancashire player to get to that landmark since Glenn Chappell did it. He reached his 200th first-class match in 2007. Some going, isn't it? Paul Horton on Thursday night reckons that he's probably his second 100, you know, went from 100 to 200 first-class games. Salt turns it to mid-wicket and there's no run. He reckons he would probably have a much superior record than his first. Just kind of getting better as he gets older, though. Yeah, he's definitely become more consistent, that's for sure. That experience is really paying dividends for him. Here's Mullaney. That's driven by Salt. Again, can't find a way past extra cover. And there is no run. Colin Munro lurking around inside the circle at extra cover for the Outlaws. Mullaney shuffles his way back in again. Balls to Salt. Bit of width this time. Carved away into the offside. Afridi out on the cover boundary fields. Salt moves on to 21. And Lancashire Lightning here at Emirates Old Trafford on Lancs TV, 5 Sports Extra and the BBC Sport website and app. A 61 for 1 with 1 ball remaining of the 7th. And Stephen Croft's back on strike. Mullaney comes over the wicket. Full length ball, hit back down the ground, bursts through the fingertips of Mullaney, so it's a dot ball to end the over. And that's the calmest over of the innings, isn't it? A few thoughts from you with that, Stephen, as we see a Stephen Croft lookalike on the screen, and then Kevin Howells is coming in. Yeah, no, that's a much better over for Nottinghamshire, and they should be trying to spin around here and apply a little bit of pressure to Lancashire, but getting through these overs now. They got a wicket, and you can see the difference in taking the pace off there. 1 minute you got Shaheen Afridi bowling 90 miles an hour, and then next minute you got Mullaney bowling best part of 70. And it's quite difficult to adjust, but that was a very good over for Nottinghamshire. Sammy Patel's about to bowl. Hello again, everybody. We've had a good day here at Emirates Old Trafford. First with the Charlotte Edwards, and now with the Vitality Blast. And what a shot that is! One bounce over the rope, it's 4 through deep extra cover off the bat of Salt. And the crowd, which has been building all afternoon into this early Saturday evening, I think are in for a real treat. Already being treated, but I think there's plenty more to come. 65 for 1 in the 8th over. Yeah, that's a fantastic shot. You can't give Phil Salt that kind of width outside the off stump, and he absolutely smashed that. Samit again around the wicket. This time it's in the same-ish sort of direction, but it's along the ground. It's just going to be a single. It's out there through more conventional extra cover area, and 66 for 1 with Salt. 17 balls faced for his 26. Croft on 2. Still showing the young lads how it should be done. Terrific. I just love the Croft story and the fact that he goes out there and yeah, he shows them how it should be done and can be done. He's a proper professional. He's a proper campaigner, and it's a testament, you know, to be a physical cricketer like he is. He throws himself around the field, and you know, to be selectable, keep himself fit all these years is brilliant. Samit Patel again. This time it's to Croft, and Croft will again find a gap just to the left of the man at extra cover, out to the deeper area, out towards that boundary. It's a long boundary out there. Get 2 runs. I mean, all for cricket and the way that things happen and the camaraderie between the two teams. Phil Salt a couple of balls ago just smashed Samit Patel. He finds himself down at the same end as Samit a couple of balls later and gets Samit to do his bootlaces up for him. That's not on, is it? 68 for 1 in the 8th over. And again, Croft will find a run or 2. Again, good running. I mean, it's a long way out there. And they make good use of that space to pick up another couple of runs. And Croft to 6, and the score to 70 for 1 in the 8th over. And this is what Lancashire do, and Croft showing all his experience, working the angles in the ground. 2 runs every time.
Patel again in. It's in the air and it's been caught. Good catch, sliding to the right at backward point, taken really well by Conor McKerr, the man on loan, and he's worth it for that catch. An important wicket. 2 wickets down now. It's 70 for 2 in the 8th over. Yeah, that's a nice catch. That Croft just done ball, just slid on a little bit. He didn't quite manage to get a good bat on it. It sliced off the face of the bat. Didn't get into that gap on the offside and just managed to lob. But a good catch, moving to his right, down low. Croft will be disappointed with that. We're talking of campaigners, international campaigners. On comes Daryl Mitchell now. And Salt just punches gloves with him. Has a bit of a word. What will they be saying? So presumably this is the chat of what's it doing, how's the pitch playing. Don't tell me it's about what pizza you're having later. And what's he saying to him? How do you think it is playing at the moment? He'll be, asking for validation about, is the wicket playing the way we spoke about before the game, or is there any differences essentially, and anything major that they haven't discussed? But normally there'll be just a bit of a pat on the back and say, come on, mate. Yeah. Good luck. Enjoy. Sometimes it is when there's 8 or 9 wickets down. Good luck. But it isn't that case at the moment. Patel in, bowls, and Mitchell shows that bit of respect into the offside to complete that over. 8 overs, 70 for 2. Salt on 26 off 17. Mitchell has just gone out there, but Croft is out for 6. Caught McKerr off the bowling of Patel, and Patel now has picked up 1 wicket, but for 24 runs. And at 2 overs, is Mullaney to continue? It looks if it is. Mullaney, 3 runs coming from his first over. So they're off to a cracking start. Clearly, the score will tell you that. And now into this different period of play. I'm delighted to say that David Lloyd Bumble's with us. Get his views on what he's seen so far the first 8 overs, and every ball to come in the next few at the moment. Let's see how quickly you're going to get this game going. There were worrying signs for me in Blast-Off Day a week ago that we were down to IPL-type timings where things just got dragged out a bit. But I don't think so. I think they're picked up in time-wise. And that one is a shot which has been picked up and drilled down here to long off the bat of Salt. What a lovely atmosphere as well, getting right behind the team. It is a good place to come and watch and enjoy your cricket here. And on what a night. Glorious, glorious weather. 71 for 2 in the 9th over. And Mitchell is going to face his first ball from Mullaney. Good evening to you, David. Good evening, Kevin. 200's on here. You play on this pitch for weeks on end. This is the 4th match that's been played on it. It's done nothing. It's an absolute road. Mullaney runs away from us. It's from the Statham end, and he's bowling to Mitchell. And Mitchell will find a gap. Nice looking shot, but it's just along the ground. He'll get himself 1 and have to settle for 1. Keen to be coming back looking for the 2nd, but it's not there, just the 1. He's off the mark, 72 for 2 in the 9th. It's a big boundary to that leg side, but you're hitting with the wind to the new building, to the new hotel.